Spike rush. They dragged Chamber out of his corner office. I can smell his cologne from here. बोल अमल। हाँ भाई कैसे हो? मैं बढ़िया। स्ट्रीम देख ले जाके YouTube पे चल रहा है अभी। स्ट्रीम कर रहे हो आप? यप। Go, go, go! Bye, monsieur. I'm out of here. कॉम्प भी खेल रहे हो आप? नहीं नहीं स्पाइक खेल रहा हूँ वार्म अप। यहाँ पे मैं वो कॉम्प भी दिख रहा है। One enemy तेरी remaining. पार्टी में होगा ना मैं। Spike हाँ planted. पार्टी में। Go, go, go! ये आपका गोल्ड है यार मेरा सिल्वर। Shortcut! Spike's dead. तेरी You're welcome. तूने पार्टी कॉम्पी में सेट की है ना तो कॉम्पी दिखाएगा। Very good. It's playing hard to सही बात get. है। All right, I'll play. सोया नहीं रात को तू? क्या? रात को सोया नहीं तू? नहीं सोया मैं। सारे सोता कब है तू फिर? मैं दोपहर को सोऊंगा ना, 2 घंटा सो जाऊंगा दोपहर में जिम के पहले। I'm out of here. Gotta go. एक सेकंड तुझे इनवाइट देता रुक। नेमेसिस कॉम्पी कर रहे हैं। रुक मैं स्पाइक ये वापस कर रहा हूँ खत्म करके आया। भाई कॉम्प सेट रहेगा। अरे ब्रो मेरा आयरन है। Spike planted. Last player standing. मार डाला। See ya. भाई यार क्या दिमाग खराब। दो ही है। आर्सेनल हाँ नेमेसिस बोल। Last round in the Yeah? half. Go, go, go! वापस बोल रहा You clean up whatever's left. क्या बोलना है? टीम ही घटिया है भाई। केओ लेके आगे बढ़ना पड़ रहा है। मुश्किल कर रहा हूँ अपना टीम नीचे माइक को ब्रेक। You want to play? Let's play. Get out of my way! Gotta go. क्या आवाज आ रही है? पूरे मैच स्ट्रीम देख ले जब तक मैं आता Go, हूँ। go, go! एनर्जी मत दो उसको। मैं तो भाई पूरे मैच उसका माइक अनम्यूट करके रखा कि खुद तो बोलेगा इंसान। Running low. One enemy remaining. बोले तो सही। ओए मार गया। Switching sides. चलो फिर आप तो प्लैटिनम के हो, ये गोल्ड के हैं, मैं आयरन का हूँ। कॉम्पी हो ही नहीं पाएगा। हो जाएगा अगर 2 और हाँ और 2 आ जाएंगे तो 5 मैन हो जाएगा आराम से। अच्छा हो जाएगा। 5 मैन हो जाएगा भाई आराम से। 5 मैन पे तो कोई भी रैंक को ले जा। Gotta go! भाई कोई भी रैंक 2 है मेरे पे। कटवा मत देना। I'm out of here. Out of तुम charges. मॉडल वाले को भी बुला Right, दो। go. Go, go, go. पूरी लॉबी बुला Bye, रहे हैं। monsieur. 10 प्लेयर के आते हैं, ठीक है। Gotta go. एक आयरन है, एक आयरन है, एक आयरन Gotta go. There. Go, go, go. One enemy remaining. अबे सारे काट डाला शॉर्ट एंड फक। Time to jump. मुंबई में रहती है क्या? कौन बे? नॉट अमल रहता है मुंबई में। रुक और कौन कौन है?
Match point. Let's end this. खेल रहे ना कॉम्पी। हाँ हाँ बस आ गया मेरा, खत्म हो गया बस, एक राउंड और है। क्या है यार? भाई स्पाइक रेट इतना बड़ा होता है क्या? Quick feet, quick trigger. मेरे को लगा 10 मिनट का होता है। 10 मिनट का होता है लेकिन फटाफट I'm out of here. क्या हगा है? वो तो तुम My ult ready. They will cower. One enemy remaining. Looks like I. Attackers win. No charges left. No charges left. No charges left. टाइम क्या हुआ है? 12 बज रहे। चलो 5 घंटे है, 5 घंटे आराम से करेंगे। 5 घंटे में गोल्ड। 5 घंटे तुम खेलने वाले हो? Probably. भाई पढ़ते हो? पढ़ाई का मतलब जॉब करते हो क्या आप? नहीं, दोनों ही नहीं करता। जिंदगी में कर क्या रहे हो? मरवा रहा हूँ और कुछ नहीं। चलो बुलाओ 1-2 बंदे और। मेरे वाले तो सब बोल रहे हैं थोड़ी देर में आएंगे, 1-2 घंटे बाद आएंगे सब। सबका कुछ मेरे काम वाले है। ऑफलाइन और वही सारे आयरन के, फायदा नहीं है बुला के भी। अगर आयरन वाले आ गए। एक बंदा बुला लो लेकिन वो बहुत बोलेगा बहुत ज्यादा। मत बुला भाई मेरे। अरे बकारो आ गया, नेवर माइंड आ गया। बकरो आ गया? हाँ आया वो। रिकॉर्ड किया ना मैं गोली। बकारो कह रहा था मैं, कितना गंदा बकारो कौन है? एक सेकंड के लिए बकरो। बकारो। तो एक और बंदे को बुलाता हूँ मैं। हाँ भाई बकरो, क्या चाल? एक सेकंड चलो। अगर अभी भी गोल्ड या प्लैटिनम की लॉबी आई भाई तुम शुभ बोलो ना। जी लॉबी आएगी। गंदी बातें क्या कर रहे हो भाई? शुभ बोलो। सिल्वर की आनी। सिल्वर या गोल्ड की आएगी पक्का। प्लैट की तो आनी नहीं चाहिए। गोल्ड 3 की भी नहीं आनी चाहिए। गोल्ड 2 तक की नहीं आनी चाहिए। गोल्ड 1 की आनी चाहिए मैक्स में। मैं बोलता आयरन लॉबी आनी चाहिए। वो आगे तो फिर वो आएगी तो फिर हम नेमेसिस और आराम से एक फुल हार्ड कैरी होएगा आज तो। प्लैटिनम गोल्ड प्लस ज्यादा नहीं होगा। प्लस ज्यादा नहीं होगा लेकिन प्रॉब्लम वही है, तो 50 किल करेगा ना फिर भी 10-15 होगा मैक्सिमम। इतना तो नहीं बट 20 प्लस। ये क्यों होता है भाई? ये तो अच्छा मतलब किल्स अच्छा सेम हमारे जैसे रहेंगे। 50% लोअर भाई, 50%। पहले 25 होता था। गोलू बकरो जो भी अगर YouTube पे नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो तो जाके देख लो, YouTube पे स्ट्रीम चल रहा है। अगर बोल रहे हो तो देख के बोलना। स्ट्रीम चालू मेरे बैकग्राउंड में, समझे? आपका स्ट्रीम चालू मेरे बैकग्राउंड में, सुनना है आवाज? लिंक नेम सेम नेम ब्रो, जो यहाँ पे नेम है वही है YouTube मैं पे। डीसी पे तो क्या रिपोर्ट कर दे। डीसी पे तो क्या आपको बकरो? क्या बोल रहे हो? सॉरी। डीसी पे तो क्या आपको लिंक? हाँ दे दो, मेरे को डीएम कर दो। ओए गोलू रिपोर्ट मार दे इसका YouTube चैनल सेक्सुअल हैरेसमेंट। हाँ कर दे। बोल रहा है खुद रिपोर्ट कर दे, टीममेट को ही हरास कर रहा है और नेमेसिस हरास हो रहा है, कर दे जाके। ठीक है। बकरो आपका वो क्या है? यूजर नेम क्या है? हाय जय। सर्वर पे अरे वो ग्रुप में उठा ना, ग्रुप में से। ओए शेयर भी कर दो बे जितना हो सके। अबे मेरे चैनल पे वैलोरेंट से ज्यादा गेंशिन के लिए ये आ रही है, रीच आउट आ रही है बहुत ज्यादा। आप डीएम करो एक बार, मैं फिर आपको भेज खेला है बट मेरे को कोई मिला नहीं साथ में खेलने वाला, तो मैंने छोड़ दिया। अबे तू सोलो खेल, पहले सोलो खेलना पड़ता है, उसके बाद ही मिलेंगे साथ में खेलने के लिए ना, अनलॉक करने के लिए। हाँ अनलॉक करना पड़ता है मल्टीप्लेयर पहले। ओ भाई बहुत काम है भाई। मेरे मन कर। तू जितना वैलो ग्राइंड कर रहा है ना उससे ज्यादा तू अगर उतना ही टाइम अगर तू गेंशिन में करेगा ना निकल जाएगा आराम से। मेरे को पता है क्या, मेरे को लाइक कॉम्पिटिटिव गेम चाहिए, जैसे सीएस हो गई, वैलो हो गई, जीटीए 5 भाई दूर तक नहीं। अगर कॉम्पिटिटिव सीन के लिए तू ऐसे एफपीएस टाइप पे जा, कंटेंट चाहिए ना अगर तो गेंशिन जा।
या फिर एल्डन रिंग और गेंशिन के लिए बहुत जाएगी बोल रहा हूँ। अरे आप खेल रहे थे ना कल आर्सेनल में, कुछ देखा था आप? या रात में गेंशिन खेल रहा था कल, नहीं परसों खेल रहा था गेंशिन। कल तो मैं स्ट्रीम किया ही नहीं। हैं? कल खेल रहे थे? नहीं, अरे रात में हाँ रात में गेंशिन खेल रहा था। हाँ मैं देखा था आपको। वो रात नहीं होती, वो सुबह सुबह होती है। हाँ वही 4 बजे तक खेल रहे थे। 4 बजे खेल रहा था बैठ के मैं। कर रहे हो भाई। मेरा क्या सीन था, कल शाम को 4 बजे सो गया शाम को, और रात को 2 बजे उठ गया मैं, और उसके बाद नींद ही नहीं हुई। क्या सोना भाई, सोना इज इक्वल टू टाइम वेस्ट। या नहीं चाहिए। अरे नहीं, मैं हॉस्पिटल गया था अच्छा, तो उसके बाद मैं थक गया था कुछ ज़्यादा ही। क्यों गए थे हॉस्पिटल? डेंटल। अच्छा, मुक्का मार दिया क्या किसी ने? नहीं, मैं किसी को मुक्का मारा और एक बंदे को हरीत यादव। हाय हरीत, हाय वेलकम टू द स्ट्रीम। मैं ही हूँ, ठीक है। पता है। तो ऐसे इंडियन भी अच्छे से बात करा करो। नहीं करूँगा। वो स्ट्रीम पे इतनी इज्जत दे रहा है, ठीक है भाई, कर दो तो। बकरो शायद पहली बार दिखा है स्ट्रीम पे। यस भाई बकरो, अरे इसने इतना डेंजर रेस लिया था ना उस दिन वैंडल से, मतलब गलत ही रेस ले लिया था। आज हमें प्लाट लॉब लकी था वो। रेडिएंट लॉबी मिलेगी का? ब्लड लॉबी आ जाओ। रेडिएंट लॉबी भाई 4 मिनट हो हाँ गए भाई, तक और मैं lobby गेम नहीं अनइंस्टॉल हुआ। कर दूंगा उसके बाद। अरे नई वाली क्लासेस कितनी अच्छी लगती है बैटल पास में। स्टार्टिंग वाली में क्लास है? कौन सी, बंडल वाली? नहीं बैटल पास में जो मिलती है बैटल पास वाली हो गया आपका? पूरा खत्म हो गया? नहीं पूरा नहीं हुआ। हाँ और लास्ट वाले में लाइक। अच्छा, नॉर्मल लग रही है मेरे को, पता नहीं, मे भी अच्छी होगी। इसका वेरिएंट अच्छा ब्लू वाला। हाँ अच्छा, तो नाइफ बड़ा बेकार है इसका। डोरू वाली है सारी। चंपू नाइफ है अच्छा हाँ अजीब सा है। बैटल पास का। मेरे को आरजीएक्स वाला चाहिए यार। नहीं RGX बहुत महंगा है। आर्सेनल कब कर रहा है स्पॉन्सर? मैं would make it part of matching will be faster, just saying। कर दे ओपन पार्टी। क्या भाई, क्या ओपोनेंट वाले हमारे पार्टी में आएंगे क्या? क्या मतलब है ये? ये भी ठीक है। ओपोनेंट वाले अपने पार्टी में आके बात करेंगे, गजब ही हो जाएगा। हम कॉल देते रह जाएंगे, वो कॉल सुनते जाएंगे और हम हारेंगे, ठीक है। अरे तो एम भाई वो उल्टा डर तो थोड़ी है यार, गंदी बातें कर रहे हो। मैं उल्टा सोच रहा था। It works for me, I don't know। प्रोटोकॉल शेरिफ आई है, दुष्पब जज आई है, ब्लास्टेक्स की चक्कू आई है। यार ये नया बंडल यार एक बात बताओ, अंडर सिटी क्लासिक और ग्लिच पॉप का क्लासिक सेम नहीं है? अंडर सिटी कौन सी? नहीं ऊपर का जो कलर है वो डिफरेंट है, बाकी पूरा ओवरऑल सेम है। मेरे को तो सेम लगता है। पसंद नहीं है। एनिमेशन डिफरेंट है जस्ट, और कुछ नहीं, एनिमेशन थोड़ा डिफरेंट है। हाँ वही, एनिमेशन डिफरेंट है, वेरिएंट तो बाकी डिजाइन, हाँ डिजाइन सेम है। मेरे को अंडर सिटी क्लासेस भाई देख के उल्टी, अंडर सिटी बंडल देख के उल्टी आती है। तो नाइफ भी जो है ना वो अजीब सी थी यार। ये अंडर सिटी ना ग्लिच पॉप के पहले बहुत ये था, बहुत प्रॉपर एकदम सब लोग ले लेंगे थे, सब लोग। मेरे को पता नहीं अंडर सिटी इतना पसंद ग्लिच पॉप आया, फिर सबने बोल दिया यार ग्लिच पॉप लेंगे, ये तो बेकार है। बेस्ट नाइफ आरजीएक्स वाला, फिर उसके बाद आता है वैलोरेंट गो का जेट वाला मेरे पास लाख सबसे फाड़। आरजेक्स का ब्लेड, वो जो सेबर की तरह निकालता है वो वाला। हां ना भाई 6 मिनट हो गया, अब 7 मिनट हो जाएगा, क्या बदतमीजी है। 5 मैन, एक तो 5 मैन और ऊपर से रैंक डिफ है। हाँ ना, एक दिन तो भाई इतना वेट करना पड़ा था मेरे को, याद है 12 या 13 मिनट 2 बार वेट करना पड़ा था 26 भाई तुम 12 मिनट तक रेड हो गए, मेरे को 8 मिनट मैक्स गया है। मेरे लिए 27 मिनट चाहिए। मैं जब भाई 5 मैन फ्लैट खेल रहा था तब की बात है। हम ये कब था, 1-2 हफ्ते पहले शायद। मैं क्रिजलर और एक यूट्यूबर, एक और 2 दोस्त 5 मैन किया। ओके नमस्ते, ओके चुप कुछ नहीं बोलना। क्या हो रहा है ये?
भाई 8 मिनट क्रॉस हो गया तो आज रिकॉर्ड टूट जाएगा। यार खुद को ये अगर 28 मिनट हो गए ना आज तो मेरा रिकॉर्ड क्रॉस हो जाएगा। तो ना 10 मिनट होंगे ना, सब अपने अपने रास्ते निकल भाई जाए। काम करते हैं सब लोग, कोई करके बैठे नहीं, रिकॉर्ड तोड़ लेते हैं अपना है, गेम नहीं खेलेंगे आज। देखो सबसे ज्यादा मेरा है 28 मिनट अगर क्रॉस हो गया अमन तू खुद निकल जा पार्टी से, बकरों को भी किक कर दे, हम 3 मिनट कर लेंगे। 28 मिनट वेट करेगा तो पागल है क्या? है क्या हुआ? मैं नहीं कर रहा वेट 28 मिनट का। तू वेट करेगा, मैं रिव्यू करूं क्या उसको? हम वेट किया ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक वेट किया था हमने एक बार भाई साहब, लेकिन हम मैं बात review बातों बातों में भूल लाइक टाइम का पता नहीं चलता ना, बातों बातों में हम बात करते गए पता ही नहीं चला। हाँ हाँ बीच में को भी बुला लेते। अरे बुलाया था ना तब तो वो नए भी नाम थी। कहाँ से आ रहे हैं यार सुनील? क्या? काफी सारे नए नाम सुनने में आ रहे हैं। अरे तू क्रिजलर के साथ खेलेगा ना सबको जान जाएगा तू। आर्सेनल फुल सिंपिंग रे, रॉक्सैन, फायरबॉम्ब। Match अरे found. हो ओए गया। ओए ओए शो। रिकॉर्ड टूट गया क्या? मेरा रिकॉर्ड टूटा कि नहीं टूटा? हाँ टूट गया तेरा रिकॉर्ड, टूट गया तेरा। मजाक कर रहा था गाइस। मैं सिम करता हूँ मीजो के लिए। वो तो सभी करते मीजो तो है। मीजो तो सिम्प मटेरियल है। हैं। छी भाई ये नहीं बोलना था। व्हाट द फक। नहीं लाइक एज एन इंस्टेंस बोल रहा हूँ। मटेरियल बोल दिया भाई, ठीक है भाई मैं बताऊंगा उसको। हाँ। बोल दे जाके, तो बड़े वो जानती है, बात करती है मेरे से। चल कर। खुश हो गई तो। खुश तो नहीं होगी वो, गालियाँ खिलाएगा तू मेरे से। चुप कर यार। भाई पिक करो जल्दी 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 पिक करो। आर्सेनल एवान है ना, एवान गॉर्डन। हाँ स्प्लिट है है ना। अच्छा। हाँ गॉडलाइक का, हाँ बोल बोल। हाँ उसके स्कूल में आई गेस पायल पढ़ी थी उसके साथ, और उसके कॉलेज में मीजो। ये नहीं, स्कूल में मीजो, कॉलेज में पायल। हैं पायल वो वाली मतलब हाँ जो हाँ पीछे वाली? टीएसएम वाली एसएटीएल वाली। वो भाई टीएसएम में अबे एसए2 होगी ना। पहले टीएसएम में थी, टीएसएम एनटीडी में थी, फिर एसएटीएल गई। उसको जॉन वो पसंद है ना, जॉनसन। हाँ हाँ जॉनथन के साथ ही थी वो। हाँ। हाँ क्या? ठीक है। अमल चेंबर खेलना है तो खेल ले। चेंबर नहीं आता मेरे को, मैं रेस खेलता हूँ, रेना खेलता हूँ। रेना या चेंबर जल्दी बताओ, रेना या चेंबर? चेंबर ले रेना ले। या रेस? रेना ले ले। चल लास्ट मोमेंट में बताए हो ना। अरे तू चेंबर क्यों बोला तो फिर बीच में? चेंबर नहीं बोला ये था। चेंबर गलती से, अरे आपने बोला चेंबर, मैं आपको सुन के गलती से बोल दिया। कोई नहीं अबे डिफेंडिंग आ जा यार, निकाल देंगे आराम से। अबे यार एसआईटी भाई। किस्मत खराब है ना अपना, डिफेंडिंग कभी मिलता है? अभी स्टार्टिंग में देखो सिट रोल्स नफी सिट क्राइंग। एसआईटी डिफेंडिंग मेरे को नहीं मिलता है मोस्टली। एक सेकंड मुझे खुद की स्ट्रीम खोलनी पड़ेगी। Maybe their killjoy isn't as smart as ours. I don't want to deal with her if she is. Yes. Hello. Hello. No. Yes. रुक जा एक दो। डिफॉल्ट वॉल करके जाना तो जा सकते हो, मैं मिड से लर करके आऊंगा। Here. इनका केजे है, देख के जाना। Yes. गोश्त दे। ओए कौन सी गोश्त है? हाँ तेरे पे दे। Can someone thank you? दो हेवन। ओ तूने पाए। केजे इधर, केजे लेफ्ट। अमल का नेट क्या? Cover going out. रीमेक कर दे। Shadows ऊपर traveling. है। Enemy spotted B. आओ ना साइड आओ। Healing you. Enemy spotted B here. साइड पे ही है, साइड पे। Left flank. Finish. Spike down B. हाय अंदर तू। I got the spike. Thank you. बैक स्टेप देख, बैक स्टेप। एक हेवन एक अंडर हेवन Watching here. One enemy remaining. दे इसको। नाइस वन। भाई मेरे को तो एक गोली से मैं नहीं मिला एक गोली। Sage, ये ले। the life you give. Do you ever wonder where it's taken from? मैं नहीं चलाता सिर्फ वक्त। Reloading. बाय कर लो स्पेक्टर्स।
अमल नेट का क्या हुआ बे तेरा? Here. मेरा ऑडियो अजीब सा आ रहा है गेम में, नीड हेल्प। कोई नहीं ऑडियो रिसीव हो तो ठीक है। Yes. Shadows traveling. पी जाओ। 8 मीटर है। Enemy spotted B. Time to हेवन वाले को ये कर रहा हूँ, हेवन वाले को ये ब्लाइंड दे रहा हूँ, घुस जा। Stealing sight. अरे इधर मेरे को Enemy spotted mid. Cover going out. You fought well. बोल भाई। भाई मेरा ऐसे One enemy remaining. For now. भाई मैंने एक बंदे को देखा वहाँ पे। We showed them their नहीं place. हुआ, 2 बंदों Now को keep them there. मैं सबको हेडशॉट दिया है, मत बोल। भाई प्लाट तो है। मैं खेल नहीं रहा सीरियस, ठीक है? हाँ भाई, चाहता नहीं Kill my सामने copy. कैरी होते वक्त कोई सीरियस नहीं खेलता। मैं चाहता नहीं, ठीक है? ऑपोनेंट वाले डिमोटिवेट हो जाते हैं। देख अब तू। अब वो बाई करके आएंगे ना, अभी प्रॉब्लम वही है। नहीं तू देखते Here. वेंट्स दे रहा हूँ स्मोक तुझे। Shadows traveling. स्मोक टफ है लॉल, अभी देखा मैंने। Train hard. बोलू किल तो reloading. तुम दोनों साथ में खेलो, प्लेयर बनाओ। आएगा। Shadows traveling. Blinded. बोलू Blinding. Blinded. लेफ्ट में इसका। Still in sight. अरे लो यार इसको, ये बैकअप साइट है। जेट को गया, निकल जा अमल। One enemy बैकअप साइट remaining. लास्ट। लेफ्ट पकड़ो लेफ्ट। देख लेफ्ट देख। Last player Anti. standing. नाइस वन अमल। Bright you are. पैंटम उठा ले इसकी। You'll never be a कितना radiant. वेट करेगा? बोलू कितना? Damn right we're crushing it. बोलू ओ बोलू। बूम बॉट था हाँ उसका। अब तो बाहर नहीं आएंगे। वैंडल दे। Yes. I need this. कौन सी है हैंडल? हम Thank खेलेगा you. हम खेलेगा अब लेफ्ट हैंड। गोलू का है? Here. कौन सी हैंडल है? स्विच कर लेता था। Bleed them dry. मिड पुश है बे। मैं बीच पूरा दे सकता हूँ आराम से। Hawk out. Enemy spotted. दोनों बैकअप साइड, मत जा, दोनों बैकअप साइड में। Party's over. एक हेवन, 2 बैकअप साइड। यहाँ पे एक और। लास्ट टू बी। ए जाओ। अमल ले आ जा। Reload. अमल ले आ फटाफट। One enemy remaining. हॉपर, लास्ट हॉपर। प्लांट कर दे जाके। Blinding. सरेंडर करना है 10 मिनट। कहाँ से आप करा सही? मार्क कर दे मैप पे, कहाँ से आप करा सही? नाइफ करेंगे, आवाज मत कर। कुत्ता है? कुत्ता करेगा। हेवन से मत जा, कुत्ता कर रहा है तो तेरा। कुत्ता कर। मैं देख रहा हूँ। वो बॉक्स तक पहुँचते ही उड़ जाएगा तेरा कुत्ता। मेरा गेम स्टॉप हो गया, सॉरी। देख बोला मैं तुझे। नहीं दिखा। बीमेन हो गए। बीमेन है। हमें साउंड आ रहा है क्या कुछ? Hawk out. नहीं अपने स्पॉन में बैठ गए हमारे। कोई नहीं कोई This place is दिखा वहाँ पे। nice, but not spawn nice पे। enough to die in. Let's win and get out of ये here. नहीं उसने फायर किया था। एक मिनट मारो। नहीं हाथ में ऑप थी ना उसके। Thank you. बैठ चलो बे। Thank you. क्या लगता है सामने वाले की रैंक क्या है? गोल्ड।
मैक्सिमम। पता नहीं तो सिल्वर वाली फीलिंग है। हाँ तो सिल्वर वाली फीलिंग है, ये लोग ट्राई हार्ड गोल्ड होंगे सब। Hawk out! Blinded. बॉल मत कर। बोलू मार के रह तुझे यार। बोलू एक मार के Hawk out! Blinded. ऑफ के लिए Here. Here. ठीक है Enemy spotted. B. आ जाओ ये जल्दी। ठीक है बोल। ठीक है बात क्या चल रहा है? ए चल One पी चलो minute. चलो। Reloading. Your duty is not over. Hawk out! Stealing sight. Reloading. Cover going out. Cover going out. हल्ट उस बोलो पे। ऑफ दे जरा। बोलो इधर देख। Healer down. और बोलो। क्या वेट हुआ? एक हेवन। मैं देख रहा हूँ। मतलब भी कॉपर है। You should run. हम क्या अंदर मतलब अल्टी मारी। देखना आपको देख। No charges. Spotted B. लग गया। Enemy spotted B. अरे कहाँ? Last player standing. 5-1 मेरे पे टीपी नहीं थी यार, फक। तो फ्लैश ओमन यू कैन वॉल बैंग। अरे मैं वॉल बैंग कर सकता हूँ लेकिन मुझे लगा नहीं वो हार्ड पिक कर ही लगा था। अरे पोजी क्यों रिवील करनी है फालतू में? I'm no doctor, but but I can catch a bullet hole or two. Let me know if you need healing. तो फ्लैश से नहीं फ्लैश मेरे साथ कौन कूद रहा है? ऐसे चिपक के खेलेगा, मेरा ऑलरेडी एफपीएस ड्रॉप हो रहा है, ऊपर से तू भी करवा देगा। हाँ मेरा भी हो रहा है, तुम लोग का भी हो रहा है क्या? हाँ मेरा भी हो रहा है। अरे मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ ना तो मेरा होगा ऑब्वियसली। तो ऐसे ही मेरा तो वही 60 आ रहा है, फिर भी मेरा 60 हो जाता है। तेरा नेट भी कम है ना तेरा। लिखकर है Hawk out! Hold on. Omen killed. Weapon here. कंट्रोलर गया Shadows traveling. Cover going देख के। out. एक मिनट Stealing sight. ऑल थ्री इवेंट। मत करना आप मत रोबोट के मैच में Cutting their vision. Done with. तेरे को देख रहा हूँ बकरो, मार दे आज तो सबको। बकरो दिखा दे वन टैप, वो देखो हाय हाय One enemy remaining. ले लिया। Look for my shadows. They will hide थैंक यू you. फॉर द ऑफ आर्ट, कल आना। थैंक यू फॉर द ऑफ आर्ट। गन बाय कर। नॉर्मल वैंडल बाय कर, नॉर्मल चला रहा। Spikes here. थैंक यू फॉर द ऑफ आर्ट। ये जाना है कि नहीं? हाँ मेडी चलो ना, वॉल तोड़ दो, ये ऑफ कर लेगा आराम से। Here. As one. Going B. गोलू बी पे फर्स्ट पिक लेना तुझे, ले ले। भाई मेरे को कुछ दे दो भाई। Hawk out. फेंक देना। Blind. पुश है बी में पुश है। Pistol. बी में पुश है, ओमन क्लोज है। यहाँ पे ओमन। Blinding. तेरे को तोड़ना पड़ेगा मेरे गाड़ी को। अरे राइट में। छोड़ दो। क्या वो फॉर्म किया? Hawk out. Blinded. दो हेवन। You will not kill my ally. 3 हेवन। तो सीटी देखेगा? देख रहा हूँ। जस्ट कैम, डोंट डाई। Enemies B. बकरो हट कर दे। क्या Found one. Enemy spotted B. आराम से, कोई जल्दबाजी, कुत्ता भी है तेरे पे। Hawk out. Blinded. तेरे पीछे। Last player standing. बंदा पूरा ही घूम रहा है।
2 गोली वो कर देगा पूरा। Come am. Let's go. I got things to do. ओह माय गॉड करके कोई फायदा नहीं है। नेमेसिस गन पे खेल। इतना आर्ट्स लेके एक बंदा आ रहा है, अपन 3 स्टैक करेंगे लाइक प्योर कॉम्प। बोल। For you, hermanita. मिलेगा इसका 3 मैन कॉम्प? प्रॉब्ली पता नहीं। हट सेज जिफ्ट है, सेज जिंक्ट है, सेज हील चाहिए। साजे हमारे गोलू हील। डबल मिड For you. चले जाने दो इनको मिड पे। शौर्य खन्ना, dude I don't know your in-game tag, just tell me what it is again. Enemy spotted. कवर Block inside. among us. Your duty is अरे not वो over. Last player standing. गोलू बहुत गंदा इंसान है, तू पता है? OCX, yeah I'll text you. शर्म ही नहीं है। Stand tall. We are Valorant. We ए are चलो fighters. आ जाओ आओ। क्या डिफेंस निकलेगा? अरे निकल जाएगा डिफेंस आराम से, चल कर डिफेंसिव मैप है पूरा। गोली यहाँ पे जल्दी यहाँ पे। Here. इधर वॉल कर मेरे को। करके फट अच्छा ओके ठीक है भाई। No prisoners. और यहाँ से पीक ले, यहाँ पूरा ये पूरा देख कौन है, कुछ है कि नहीं। वॉल कर Cover going out. ऊपर कर। Still in sight. Watch them run, scatter. वन एल्बो। चलो हेवन कर फ्लैश। एक साइड Behind you. Blinding. अरे 2 लोग। Multiple enemies A. No more. 3 killed. One enemy remaining. इजी। Worthless dead कर ले, टीम को वेट कर ले, कितना करेगा? हाँ तुम लोग घुसो ही मत, मेरी गलती है। Monster. I mean it in a good way, I swear. जाते हैं। सॉरी या आई फिगर बोल दिया, रिमेंबर नाउ। हाँ पता है आई नो। नॉट अमल भैया डिस्कनेक्ट हो गए, तो अच्छा Spikes here. Here. Keep up. Here. आप उनका ओमन बेटर है। Get out of my way. I got the spike. नाइस शॉट गोलू। ये सुनो ना, थोड़ी देर होल्ड करो ना, मेरे को लर्क है मेरा। Shadows traveling. लर्क तेरा तभी होगा जब हम साइट एंटर करेंगे, तभी वो लोग रोटेशन देंगे ना। is heaven. अब आजा पीछे, आजा पीछे, Loading. आजा पीछे। बकरो तेरे पे स्पाइक है। Shadows अच्छा आ रहा है। 140 Barrier here. जा ये जा। रेज होगा ये पे प्रॉब्ली। नहीं रेस भी पे था। cover going out. तेज भी उधर ही था, सब उधर ही गए। Plant the spike. Come on गोलू, you can do this. अरे इसका लॉकडाउन है। पुश मत करो। Hawk out. Blinded. पुश मत कर। You should run. They can cuss. पुश कर बाप रे। Hawk out. One enemy remaining. दोनों जाओगे।
अरे साइड पे है। आराम से तेरा प्लान नहीं है, तेरा भी टाइम ही नहीं है। घुस जा, मुंह पे घुस जा। नाइस वन। दिखा दिया तूने, सबने दिखा दिया। Here. सब उठा लो। मेरा अल्टा इसका अल्ट आ जाता। छी यार ना मिसेस। यस, बाउ डाउन। No. Quiet. No. फैंटम से इस बात पे। No. The spike is still in. Thank you. नहीं एक थोड़ी। आ गया तो एफ के से। अच्छा नहीं आ सकता ना, मैं तेरे लिए गन चढ़ने वाला था अभी। आ जाओ। ओए मैं बी वेंट्स के अंदर अल्ट करता हूँ। Drop the spike. I have the spike. Reloading. ऐड करूं? नहीं। Watch them run. ओए शॉटगन पुश कर दे। एक और है, ओमन के साथ एक और है। Here. स्पाइक भी मेन कूदेगा नीचे लेफ्ट में। नाइस शॉट। एक और है। साउंड आ गया तुझे। सही जाना? ये चले। अरे ऐसे थोड़ी जाते हैं। अब कोई नहीं है, घुसो साइड पे। Healing. अरे अबे लोग खेल कहाँ हैं? One enemy remaining. आ जाओ, वो बी पे अकेले सोलो। दो वेंट्स में बैठे हैं, 3 वेंट्स में बैठे हैं, एक ए पे बैठ। अल्ट कर दे बकरो। क्या सिखा दे? कर दे अल्ट बकरो कर दे। हाँ ये हेवन बोलो फिर। वेंट जा रहा है ये बी हेवन से घूम के आ रहा है आई थिंक। हाँ बी हेवन है। मिड है बोलो दिखा दे वन टैप। तो दे में वन टैप। बकरो भाग जा। गोलू वन टैप। Hawk out. नहीं आएगा वो, भाग जा। गोलू वन टैप। दिखाई दे आज तो कि तू भी डायमंड का प्लेयर बन सकता है। दिखा दे। Yes. अपना राइट चेक कर। जाना डर क्या रहा है? यहाँ पे स्पॉट हुआ था। Last round before the switch. Don't save anything. Last chance to use our stuff. गोलू No. No. दिखा ही नहीं। अरे वहाँ पे कैंप करके बैठा होगा नीचे। I'm ये sorry. वैंडल दे मेरे को। Can someone get this? Thank you. No. Gun here. मुझे तेरी वैंडल दे। Here. 4 सेकंड पता नहीं भारी लगती है मेरे को। Weapon here. अमल भैया। Here. Multiple enemies. मेरे से इंसान की मदद की जाती है जब कोई अनगा हुआ और उसको मदद आउट करके Switching sides. ये लोग ना बहुत कुछ ट्राई कर रहे थे लोग। 3 बंदे मिड पे, एक बंदा ए पे। कभी मिड होल्ड ही नहीं है, कभी बी है, सब कभी ए है। अब इनका दिमाग लग गया कि पूरा यही करना है। अमल ए आ जाओ। ए आ जा। सेज का मिड देख लो, अगर मिड रश हुआ तो मैं बी देख लूंगा। गोलू ए जल्दी आ। Yes. आर्सेनल क्या शॉट ही है हाथ में। रखते हैं क्या? कोई फ्लैश दे। हेवन से फ्लैश दे। ओके तू फ्लैश कर अमल। अपने पे रेज होता ना। गए चिल कर। ए है। अरे फ्लैश में वहाँ किया। मार दे इसको। Opponent's killed. पहले Last player standing. देख लिया 106 नहीं मला वो स्ट्रीम देख रहा है प्लीज दिस अरे 100 टैग यार डिसलाइक मार दे मतलब पैर छू के आए इंसान पर जिंदा भी यही बचा है जो Spike planted. Can I join? 5 men are already. I guess one guy will be leaving now.
उसके बाद हम वापस एक को और बुलाएंगे। भाई कैसे क्या लैग मार। ओ भाई Please if you need me. I can't be away for long. Let's end this quickly. भी आगे सबके सब जो नहीं आया अब समझ जाओ भाई। नहीं आया जा। फिर बोलना। बी आएंगे तो मिड भी आएंगे ऑब्वियसली। नहीं तेरा फ्लैश थी मेरे पे फ्लैश है ही नहीं, कोई चीज का फ्लैश मांग रहा है। ए आई थिंक यप बेचारा। Shadows traveling. Hawk out. Kill down. Player standing. Spike planted. जेट 104 है, जेट 104 है। If you see one of my creatures, it's a good thing, alright? You'll figure out what they do eventually. अच्छा मैं ये आ रहा हूँ। Not a mother disconnected. ओए मार्शल वार्शल भाई मत बाय कर, कुछ और ले। अरे ऑस्ट्रेलिया से एक बंदा ऑलरेडी डीसी है भाई, 3 बंदे गन पे खेलेंगे नहीं होगा। मैं शॉटगन पे हूँ ऑलरेडी। ये लोग मिड आ सकते हैं, अभी बोल रहा हूँ। आ रहे निकल ले। Shadows traveling. वो बूमर तोड़ना उसका। गोलो मिड आजा। भाई यार मिड ब्लाइंड हो अरे तेरे पीछे। Spike down B. 7 मैं कब का कॉल दे दिया मैंने। Jet वन अंडर। Spike planted. लेफ्ट से आएगा नहीं वो राफ्ट पे चढ़ा था, यहाँ पे चढ़ा था। अच्छा हाँ ऊपर से ये क्रॉस देख रहे हैं मेरे ख्याल से। राइट वाला बंदा क्रॉस बना रहा है लेफ्ट वाले के साथ। नहीं है चल। एक तो पिलर है, डिफॉल्ट बैठा है, यहीं पे बैठा है सर्कल पे। राइट Enemy remaining. पीछे तेरे। Last player standing. Clutch. मिड वॉल कर दे बे, मिड वॉल कर दे। ए रिटेक कर लेंगे, मिड वॉल कर दे। मैं बोल रहा हूँ मान लो बात एक बार, एक साइड पुश कर लो। बाय मत कर। बाय क्यों नहीं करना? अबे तेरे मार्शल के चक्कर में सब राउंड जाएगा, मत कर। ऑप के चक्कर में मार्शल में बाय नहीं। जो मैं मार्शल लिया नहीं था, फैंटम लिया था मैं। मार्शल कौन? मार्शल थी तेरे हाथ में, झूठ मत बोल। मैं स्ट्रीम रिवाइंड करके दिखा दूंगा। पूछ ले हाँ ये फैंटम कमिंग भी। छोड़ दे साइड ही छोड़ दे, तुम साइड छोड़ दे। अंदर कहाँ टक गया मैं? बोल से फ्लोर Cover going out. आगे साइड आ गए क्या? आगे आई गेस मत बोल, जब तक प्लांट हो रहा है तब तक नहीं आया कोई साइड, मत बोल। मैं डर है। Watching here. ए जा रहे हैं। Going A. Shadows traveling. I'm rotating. अबे साइड पे बैठा है भाई, साइड पे बैठा है ये I रेस। need healing. Let us rotate. मेरा एफपीएस का कुछ सीन है, तो गेम डीसी मत करना Let है। us rotate. आराम से Let कर us ले। rotate. गन ले। हाँ ट्राई कर ले। वन अंडर प्रोबेबली। राइट चेक कर। Got him. रेज राइट साइड मेन। Last player standing. मत दे।
रेज ए पे बैठा है। I hate to say it, but probably best to play as a team. अरे तो गलत कॉल मत, मेरे कॉल के चक्कर में मैं रोटेशन के बीच में अटक गया, उस गैप में आ गया वो। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, बंदा यहाँ से मुझे मार के गया, मतलब वो ऑलरेडी वॉक इन कर चुका था साइड पे। अबे एक साइड में बोल रहा हूँ, स्टैक कर लो, स्प्लिट खेलने का कोई मतलब। Push them out. मतलब बिग Enemy spotted. Shadows traveling. मिड देखते रहे बात करो, मिड छोड़ना। हाँ देख। स्मोक हटने वाला है थोड़ी देर में। अरे हेवन वॉक इन करके आ गया हूँ। मैं देख रहा हूँ बहुत देर से। मैं पिक छोड़ा ही नहीं यहाँ से ब्रो, स्ट्रीम देख ले एक बार। वो कैसे वो आके मुझे काट के चला गया। You will not kill my allies. बोलो हिल Here. इधर इधर। No. No. I'm sorry. No. मिड जा रहे हैं आगे ना, आगे तो। अरे यार Last player standing. Your duty is not over. Cool. Spike planted. मुझे लगा उसका अल्ट खुल गया यार। Reloading. एक हेवन होल्ड कर रहा है, दोनों साथ में जाओ। एक ये राफ्ट दोनों साथ में जाओ। 3 down. 4 गोलियां। One enemy remaining. डुएबल आराम से। और एक काम करो, मैं स्टार्ट चेंज करता हूँ। Don't sit down. We're not done yet. साइड स्टैक कर लो, जहाँ पे प्लांट करेंगे वो रीटेक ले लो, कोई पॉइंट नहीं है। ए पे वो लोग आ रहे हैं, आज कोई मर जा रहा है, अपन का वैसे डिसएडवांटेज है। भाई मैं नहीं मर रहा इस बार, पहले वो मिड वाला मरा है और वहाँ से रोटेशन हुआ, उसके बाद पूरा गया राउंड। वो नाइस हुआ है, तभी बोल रहा हूँ एक साइड स्टैक कर लो, अपन पे प्लेयर्स ही नहीं है हर पोजीशन देखने के लिए। हाँ तो बकरो ये गोलू वॉल कर रहा है ना, ये पिक करने दे, मैं मिड होल्ड कर लूँगा आराम से। Watch this. Cover going out. Watching here. Cover going out. अरे लग गए मेरे, Enemy spotted B. अरे लग गए। मरना मत बस। बचा भाई, आ गया ना, साइड आ गया ना। You should run. Spike planted. Spotted B. हाँ प्लांट हो गया अभी पे। मैं डिटेन हो रहा हूँ, ठीक है। कोई मिड है। Shadows traveling. Enemy spotted B. एक राइट साइड फ्लैश। Enemy spotted B. One enemy remaining. Last. अरे मेन अरे यार हेवन देख रहा था मैं। Even with numbers, anything can still happen. Remember that. 8-4 से 8-10 हो गया, 6 राउंड जीते वो। बोलो ऑफ किसने क्या? Can someone get this? Thank you. वो लोग पुश करेंगे मेरे पे, तो मुझे कवर था। Yes. Watching here. बकरो मिड आ जा, बी रिटेक कर लेंगे। मैं तो रुक, मैं तू हेवन से मत आ, हेवन मत आ। तो अब कर रहा हूँ, एक शॉट लेके बीबी मिडी खेल। Cover going out. Watch them run. साइड आ रहे वो लोग। ऑलरेडी सिटी You thought you were safe, blinded. बोलो यहाँ पे टैरेट है ना। अरे साइड पे आ जाओ यार, साइड पे आ जाओ। एक और है। Spike down B. Last player standing. Spike planted. GG बे।
Scattering their vision. इसका लैग मार रहा है कि नहीं मार रहा है? लैग कर रहा है ये, इसका नेट ही नहीं चल रहा है इसका सही Prepare सही। yourselves. We अरे fight once सुनो again. एक बार, ए आ जाओ, सबके सब ए आ जाओ। अरे तो बी रिटेक करके भी कैसा मिला? हाँ ना। मैंने एक बंदा मार दिया, एक बंदा रोटेशन कर चुका है ऑलरेडी, उसका भी ट्रेड हो गया। Would you? Cheers, mate. Don't give them ground. शॉटगन कर रहा हूँ, पीक ले ले। Shadows traveling. मिड होल्ड करो ना, मिड से मरोगे तो राउंड गया हमारा। Cover going out. बी आ रहा है, बी आ रहा है। Hawk out. प्लांटिंग भी। Spike planted. अरे तुमने होल्ड मार दिया। हेवन आ चुका है वो। तेरे पीछे बकरो। एक डिफॉल्ट है Last player और एक हेवन standing. है। तेरे को पता है आर्टसन? क्या? मैं हेवन से कूदा ना पीछे, मेरे को हवा में हेड Match point. और नीचे कूदते Time कूदते to stock डायरेक्टली back बॉडी up. मार दिया, मर गया। क्या मतलब है? ये बंदा नीचे तक ना पहुंचे। अरे अमल का ये प्रॉब्लम भी गलत टाइम पे होता है। अटैकिंग में ज्यादा कुछ करते। Let's go. अटैकिंग में संभाल। ये आएंगे ही नहीं अभी, अगेन भी ये आएंगे ही नहीं अभी। Cover going out. लड़ते रहे। What's your FPS? I get around 120 bro when I'm streaming. Shadows traveling. हील है थे Yes. For you. Stealing sight. Heal दे दे। Spike planted. My bad. Last player standing. My rank is actually plat 2. I'm on G2 right now. Get out of my way. Attackers win. एक सेकंड में दूसरे को बुला रहा हूँ। O6 आ रहा है, बुला रहा हूँ। O6 को बुला रहा, निकल जाएगा राउंड आराम से। अरे मेरा एक दोस्त वेट कर रहा है। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा नहीं, 1 रेटेड में चलेगा नेवर माइंड। चलो -10 ही हुआ है, कोई बीटी नहीं है। गोल्ड का था अंदर एक बाकी तो सिल्वर। Dude, we already have a 5-man bro. बाय द वे गाइस प्ले एक दिन पढ़ना पड़ेगा। जा रहा है तू? अच्छा काम है ओके। हेल्प अमल तू पार्टी लीडर है बे, तुझे लीव करना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जा। कॉन्क्वेस्टर यू कैन जॉइन, आजा, यू कैन कम। We both D-ranked. Who D-ranked? अच्छा गोल्ड से शिवरात्रि। अरे आ जाओगे वापस। मेरा तो वही चल रहा है भाई, गोल्ड 3 प्लैट 1 गोल्ड 3 प्लैट 1 नहीं चल रहा है। Wait, I'll just send you my ID. Wait, if you can see my screen, just type this. मैं बुला लेता हूँ। एक मिनट, मैं दोनों मैंने इंतजाम कर दिया बंदों का। ओसी आ रहा है। Just a second.
काश कोई ऐसा मैप आ जाए जिसमें फिनिक्स फिनिक्स अच्छा। तुझे ब्रीज चाहिए क्या? ब्रीज सबसे घटिया मैप स्ट्रक्चर पूरा। कौन है भाई? मैं कॉल कर रहा हूँ एक बंदे को। टीम्स पे कॉल कर रहा हूँ। O6 को टेक्स्ट कर दिया, देखा नहीं उसने अब तक। तू बता, मैं बुलाऊं तो किसी को अगर मैं अच्छा नहीं लीडर मुझे आज तो मैं एग्जिट मार रहा हूँ। मैं इनवाइट कर रहा है, आजा। ट्रीजन आया है। गोलू कितना हुआ डीप माइनस तुम्हारा? 10। चलो हो जाएगा, वापस आ जाओ। ट्रीजन आया, ट्रीजन गया। Can I go jet or you guys will play? It'll depend bro. नेमेसिस जेट खेलता है, मैं एक बंदा बुला रहा हूँ वो भी जेट खेलता है, डिपेंड करेगा सब पे। आया नहीं क्या? कौन? नहीं अभी तक नहीं आया। ठीक है भाई, ये बंदा AFK है। नाइस। OC AFK है। बुला ले नेमेसिस, जिसको भी बुला रहा है। नहीं रे, वो अनडेड चल रहा है। मेरे में कोई नहीं है अभी। एक सेकंड। Conquestor, by the way, how did you join the stream? Like, किसके थ्रू आए? Were you subbed or? Already subbed. Okay, cool. एक कस्टम कर लेते हैं, एक बंदा आ रहा है।
Death match. Warm up. 1.5 मिनट का वार्म अप, व्हाट द फक। जब तक आई गेस ठीक है कर ले भाई। क्या होल्ड पे रखे क्या तूने? नहीं नहीं, टॉगल है। मैं लिटरली एक एचपी हूँ तब से। Strike at their weak points. If one link breaks, the rest will follow. Fight. I will rip the light from them. तू मुझे इतना अच्छा जानता है साले, तुझे पता है एग्जैक्टली मैं कहाँ काम करूँगा, तू वही स्प्रे देने लग गया। आउच। ओए क्या हो रहा है? दे जिगल दे जिगल दे जिगल। कौन है गार्डन पे? कौन है? ओए नोस्कोप लग जाता। डैम। The sky. कॉन्क्वेस्टर ट्रोल कर रहा है। ओके अरे मैं लेफ्ट, मुझे लगा आगे था तू, मैं लेफ्ट देखने लग गया। Next up. Damn. Shot. Oh, nice shot. हग ले। अरे मैं सेटिंग से कर रहा था। तेरी बाजू से गुजर के गई गोली। कितना भी
पीछे से मार लो सब। सारे अबे पीछे से ये कर गया कर रहा है भाई यार। ये वैंडल कौन है? ओए तेरे पीछे रहा है। शॉट पे गोलू है, शॉट पे गोलू है। चीटिंग कर रहा है भाई। क्या स्पैम है ये? अरे वो ये कॉन्क्वेशन पीछे पड़ा है मेरे। ठीक है भाई। Remaining. अबे लगता क्यों नहीं मेरा? One minute remaining. Five kills remaining. तो है 30 seconds left. One kill remaining. 10 seconds left. एक किल हो पाएगा या नहीं? हो गया। मैं मार ही दिया था यार इसको। कौन किस तरह अगर तूने गेम में ऐसा नहीं मारा? अगर गेम में ऐसा नहीं मारा इस इंसान को तो मार दे।
ड्रिक्स आ रहे हैं। एक सेकंड, बंदा वो बंदा आईडी चेंज करके आ रहा है। रुक, बंदी की आईडी पे आ रही है ना। बंदी की आईडी से कौन आएगा? उसकी आईडी पे आ रही है अर्सनल। क्रेजी क्रेजी नहीं आ रहा। अरे पता है मेरे को, मैं उसी फायरबॉम्ब की आईडी से आ रहा है क्या? वो अपनी आईडी किसी को क्यों देगी? और कौन है तेरे को पिड़ाने के लिए? और कौन सी लड़की है? रॉक्सन बोल तो रही थी आएगी, बट आई नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। बड़े लोग वैसे बड़े यूट्यूबर कहाँ पूछोगे अपने दोस्तों से? बिग यूट्यूबर्स, बिग पीपल। कौन से ग्राफिक्स में खेलता है? हैरी पॉटर। सत्तू आवाज आ रही मेरी? आ तो रही है, बट मैं शायद माइक यूज ना करूं, मेरी आवाज थोड़ी बेकार रहेगी ना। हाँ हाँ, स्टार्टिंग आ रही है, कोई नहीं। स्टैटिक आ रही है, मतलब बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। वही स्टार्टिंग। आज से तुझे पता नहीं कब दे रहा RGX वाला ब्लेड। मेरा क्या? RGX वाला ब्लेड कब स्पॉन्सर कर रहा है? हाँ, जिक्स वाला ब्लेड सपने में स्पॉन्सर कर दूंगा। सपने में तो तू अकाउंट ही ले ले मेरे से, एक नया किसी की। क्या क्या बोला? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो बोला तू। मैं रुक जा, स्ट्रीम देख रहा हूं। हेलो गाइस, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सत्तू आ रही है। अबे बेटर है या वैसी आ रही है? सेम है, सेम है। अच्छा, अकाउंट दे रहा है क्या? सपने में, सपने में दे तो सही। अब कैसी आ रही है? अब ठीक है। बस तो फिर मैं बहुत कम माइक यूज करूंगा। हाँ हाँ, कोई नहीं। ओमन खेलूंगा आर्सेनल में, ट्राई करता हूँ ओमन। कर ले ट्राई। काफी टाइम हो गया ओमन खेले हुए। अगर बाइंड या एसेंट आए तो फिनिक्स, बाकी सब में देख। मैं स्पीकर पे, मुझे अगर आजू बाजू बंदा दिखे और पता ना चले बता दियो। हाँ हाँ ठीक है। Match found. ब्रीज फ्रैक्चर बनाए प्लीज। बस खेलना है ओमन अभी? पता नहीं रे, मैं कंफ्यूज कुछ ज्यादा ही। अब डिसाइड कर लो, हैरी पॉटर जेट खेलता है और उसने इंस्टॉल ऑफ कर लिया। ठीक है, अब डिसाइड कर लो किसको क्या खेलना है। कॉन्क्वेस्ट रेना खेल रहा है, रेना ले ले। आई विल फिल नेमेसिस केओ क्या करना चाहता है? मैं लेगा ओमन। चल ठीक है, कर ले। गोलू क्या खेल रहा है?
सेज खेलेगा ये गेस। सेज ही खेलना है क्या फिक्स्ड? क्या स्काई? चल चैम्बर खेल रहा है, मैं सेज खेल लेता हूँ। एक स्काई ले रहा है? चाहिए। सोवा ले रहे तो मैं सेज ले लूँगा। बट फिर अपने पे लाए वो नहीं रहेंगे क्या? सेंटिनल, फिर वही दिक्कत आएगी डिफेंस। क्या जा रहा है? कोई नहीं, सब खेल लेंगे आराम से। I am both shield and sword. कुछ भी ले लो, होगा वही जो रामराज। VLT भी BCC ये सोच के गई थी आई गेस। ओमन डिफ तो है। डबल इनिशिएटर उन पे। हाँ ना, वही बेटर है पता। डबल इनिशिएटर, सिंगल डुएलिस्ट, एक सेंटिनल, एक कंट्रोलर पे। ये डबल ओपोनेंट वाला पूरा VCT खेल रहा है अभी। Careful of the edges. Not sure if I could catch you in time if you fell off. I mean, I'd try, of course. पैकेट लॉस, हेलो। हाँ ठीक है, सही हो गया। अगर तूने नहीं मारा कॉन्क्वेस्ट को। हाँ भाई ओमन डिप है। देख ले। Reloading. By the way, सत श्री अकाल आयुष जी। Reloading. Reloading. पैकेट तो वो Reloading. बैड लाइन, वेरी बैड लाइन। Reloading. Reloading. क्लासेस है ना? Gun here. स्पेस अब है नहीं लॉल। टाइट आना है तुम दोनों। Reloading. भागा कौन था पिस्टल के साथ? Reloading. Reloading. Blind and enter if you can. One heaven. There. गराज भी देख। तीन है। Spike down A. Last player standing. स्टैक था इनका, 3-2 थे। अबे फुल ट्राई हार्ड लोगे, हमें भी खेलना पड़ेगा ऐसा। ओमन यहाँ पे, जेट यहाँ पे, केओ यहाँ पे। नाइस शॉट। बैठे होगा एक तो एम एंड पिक करके ईगो पिक। जेट शॉट। वहाँ पे कोई नहीं है, मार्क पे कोई नहीं है। अरे डेड साइड है ना, ब्लाइंड। I still can't get over that owl, Sova. It's too cute. Why is it so cute? I'm saving. या तो फटाफट शॉट से आ जाए तो निकल जाता प्रोबेबली। Snuff them out. Reloading. टीपी मार, राइट में ऊपर है। क्यों मिड? मिड जाना पड़ेगा, स्मोक करना है। या ये स्मोक पे। Right here. Reloading. तेरे पे स्पाइक है, अभी बोल रहा हूँ। अरे Spike down A. Last player standing. कैंपर। कहाँ बैठ? ये लोग अभी से ये कैंप करने का कार्ड खेलना शुरू कर देते ना। Their jet has nothing on me. I got her. बोलो हैंडल दे। Need a drop. Thanks. स्प्लिट खेलना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। Two of them play mid. हाँ। वॉल बूस्ट करियो सेज। हाँ ना साइड पे, नहीं सुन ना, साइड पे देखना। नहीं वो हमेशा काम नहीं करेगा। There.
ब्लाइंड करेगा वो। Spike. Still in sight. बूस्टर पीछे देख। Reload. I have the spike. Careful here. साइड पे ही है क्यों साइड पे ही है। अबे टीपी नहीं रहा। Many enemies. Lock in sight. Enemy spotted. For you. Still in sight. Last player standing. अबे कैंप करके बैठे ना तो। फैंटम चला इजी विन। अरे फैंटम वैंडल की ये नहीं है। On my intel. Don't give them time to reposition. I'm saving. आप बैठे हैं भाई, कितना टायर करते हैं मैं कभी नहीं। दो लोग साइड पे बैठे हैं। करना है क्या टायर? अरे सत्तू आराम से, कोई नहीं। Fall back. तूने कुछ बाय किया था क्या मार्शल कुछ? Yes. कॉन्क्वेस्टर ये ले, कॉन्क्वेस्टर ये ले। वॉक बोलूं। Enemy spotted A. लेने दे मुझे। निकल लो। Scanning ahead. Cover going out. Here. नहीं यहाँ पे है। One dead. Last player standing. Strike down A. किसी ने मेरे को देखा क्या? किसी ने मेरे को स्पेक्टेट किया क्या? Level heads Yes. until we're home, yes? Good. बॉडी पे था भाई वो। सत्तू ऑफ कर ले। Be quiet. वॉल पुश दे। गोलू फैंटम। तुम लोग साउंड करो, पिक ट्राई हो सके तो पिक ले लो। 2 पिक के बाद ही साइड कमेंट करेंगे सोच के। Wall raised. नाइस। One A shot. 1 मिड। ऑफ था। Enemy spotted A. ओमन ने बी पे स्मोक दिया। A shot 120 टैग। वॉल बैंग लगा 120 टैग है वो। केओ रोटेटिंग फ्रॉम बी। ओमन साइड क्रिस्टल बॉक्स में। कम भी गाइस कम। दिया। केओ मार्केट। यहाँ पे सोवा फंसा हुआ है, कोई है क्या यूटिलिटी? ब्लाइंड है। छोड़ दे उसे, आ जा। फेक स्मोक कर रहा हूँ मैं। मार्केट का स्मोक दे। नहीं ये पे फेक स्मोक किया मैंने 20 सेकंड। अबे हम रिवील हो गए यहाँ पे। I can't use जाना ही that. पड़ेगा। Still in sight. Thirty seconds left. Market 1. Sova low 93. Train harder. One HP. I need healing. बी में से बैक स्टेप देख ले। हाँ वेट कर ले। पीछे खेलता है। मैं ब्लाइंड करूँ ठीक है? मेरी आवाज़ आ गई सामान। Sova One 93. enemy remaining. ये सिटी।
स्टैज देख रहा हूँ, कैम कर ले, स्टैज का क्रॉसिंग देख ले। Your tactics failed. Yeah, let's bring it back. तू ये ले। Need a drop. जिन पे बाय नहीं है बाय मांग लो, कोई किसी पे है तो दे दो। कॉन्क्वेस्ट राइट शील्ड पे खेलना पड़ेगा। थोड़ा बी आओ ना, ये छोड़ो ना। नहीं सही कर रहे हैं, सही करने दे, सही कर रहे हैं लोग। स्पाइक को रहने दे वहीं पे, जहाँ पे रोटेट करना देख लेंगे हम। शॉट स्पाइक ला ना, केजे यहाँ पे, ऑक्टोपस स्पाइक ला, केजे बी, सोवा बी, केजे बी, सोवा बी। ओए दो तो यहाँ पे है, ट्राई करो ना वहाँ पे एंटर लेने का। ए शॉट पे है बंदा। I have the spike. अरे तो स्मोक करके जाओ, शॉट पे है तो बंदा मतलब। अरे मॉली डम। हील है तो दे देना, मैं आ रहा हूँ। हाँ जा घुसो ना, लेट नहीं घुसना यार। सोवा को साइड मिल गया, थोड़ा सा वार खेल लो। मैं आ रहा हूँ हेवन लेकर। I can't use that. I need healing. रुक जा। I can't use that. हेवन हाँ बस दो बंदे हेवन देखो खाली, निकल जाएगा। No charges. There they are. Need healing. 20 seconds to heal, 20 seconds to heal. दो हेवन। One enemy remaining. Healing. And the last thing they'll see before they die. Lucky, thank you. साइड टीपी मारो। I will push catwalk. हाँ कर लो। मिड बॉटम स्मोक दे दे पहले से ही, नेमेसिस। आप है? मिड बॉटम। Cover going out. बी मेन क्या? सोवा साइड पे है, ड्रोन कर रहा है साइड से। Reloading. Shock dart. Spike down B. कौन देगा तुम्हें? वो पूरा स्पॉन से घूम कर आई हमारे। आखिरी ब्लेड वेट टीम इन पुश। Last player standing. Spike down B. Flawless. क्या चलते जा रहा है भाई? चलते जा रहा है भाई। जब छोड़ रहे तो बताओ ना। नहीं टाइमिंग इशू है यार, सब सही खेले। We are fighters. वो यहाँ से आया, देख वो यहाँ से आया पूरा ऐसे। अरे तो दो यहाँ पे है, कॉन्क्वेस्टर मिड पुश कर रहा है तो दो बंदे ए देखो, यहाँ पे खेलने का पॉइंट ही नहीं है बी पे। एक बंदा ए खेल लो ना, आराम से निकल जाता। क्योंकि खाली बस मिड बॉटम स्मोक कर रहा था, कॉन्क्वेस्टर वॉक करता। थोड़ा ड्रोन कर दे इधर मेन पे, और फिर रिवील कर दिया, मैं डैश कर दूंगा। टैग करके हाँ एक पिक निकाल ले, टैग करके निकल जाएगा राउंड फिर। Deploying drone. स्मोक में हो सकता है। रुक जाना, मैं साइड इनको लेके आता हूँ। I have the spike. स्मोकिंग एक मिनट। Revealing area. Enemy spotted A. अबे कैसे यार? घुसो ना सब। Right here. Your duty is not over. War rage. अरे Last player standing. Spike down A. गया राउंड। क्या कर रहा है?
their weak points. If one link breaks, the rest will follow. My ult is ready. My ult is ready. My ult is ready. Tap the spike. बाय मत करो कोई भी, सेल कर लो। सच्चू तू खाली बाय कर रहा है। On my mark. Reloading. रुक रुक मिड पिक मत करो जल्दी। यार ये भी मेरा गोल। Enemy removed. Fuck. दियो नहीं मत तो Spike down B. Last player standing. अबे तुमने डोर क्यों बन गया? आर्सेनल पे पोजीशन थी डोर की। डोर किसका बन गया? अरे स्मोक थोड़ा डीप दे ना नेमेसिस, अच्छा डीप दे, अंदर दे। I hate to say it, but तूने ये स्मोक दिया ना, जो ये वाला स्मोक, टट्टी स्मोक था वो स्मोक पुश करके बैठा था वो। अरे जल्दी जल्दी में दिया मैं, ये रेना ने बिना बताए। तुझे जल्दी जल्दी में क्यों देना है तुझे? रेना को जाने दे, तू अपना देखना, तू बाकी एजेंट का देख के तू खुद भी नहीं खेलेगा ढंग से। ओके वॉक करो, वेट कर रहा हूं। आई पिक वॉक करो। अरे सुन साइड टीपी मारता हूं। Scanning ahead. बॉटम टीपी मारना। ये पकड़ी। चिल कर, जे साइड पे है। बैक सब पे कोई दो लोग जगह। Stand down. ओए डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट एक, डिफॉल्ट एक। वन डिफॉल्ट तेरे नीचे सब। अरे ओ उसे कहते हैं डिफॉल्ट। यहाँ मैंने मार्क किया, उधर बंदा है। अबे साइड क्यों नहीं हो रहा टीपी आर्सेनल लिए? मुझे क्या पता। नीचे 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 यहाँ बंदा है। 30 seconds left. तेरे लिए प्लांटर बैठा था वहीं पे। No charges. No charges. Prepare yourselves. We fight once again. ओए नेमेसिस बाय कर देना उसको। हां मांग। कॉन्क्वेस्टर कैन यू रिक्वेस्ट अगेन? मेरा सेल करके शील्ड नहीं आएगा मेरे पे। नहीं आएगा मेरे पे। वॉल पुश यू। Together. इधर बैठ रहे, इधर बैठ रहे, इधर बैठ रहे। कॉन्क्वेस्टर। Wall raised. कहां आया? Scanning ahead. केओ मिड। इधर है। लेफ्ट डिक, लेफ्ट डिक। उधर ही देख के जाना पड़ेगा। ये निकल ले। केजे यहाँ पे, सोवा भी यहाँ पे है। केजे माइट रोटेट, सोवा साइड पे था। तूने डोर बंद किया क्या? स्मोक करके हाँ बस डोर बंद कर देना था। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हेवन से पिट जाऊंगा। हेवन है। के होगा हेवन पे। आ जल्दी। Blocking sight. और प्लांट। Your चिल duty. चिल चिल आर टू लेफ्ट में, लेफ्ट में। One enemy remaining. ये गधा बैकस्टैब आएगा देखना।
आ गया क्या हेवन? ऑफ उठा उसकी। ऑफ उठा ले। Last round in the half. You lose everything after. गन ले लो किसी को चाहिए तो। Need a drop. मेरे पे है बस। हाँ दे दिया हाँ दे। मेरे को कोई गन बाय नहीं दे सकता, बाय कर। फुल शील्ड भी आ रही है, गन भी आ रही है, बाय कर। नहीं आ रही। आज तो ब्लाइंड भेज दे, ब्लाइंड का जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से वो इस बार मिड पिक नहीं करेगा, मैं डायरेक्ट ना यहाँ से पुश करके इधर पिक कर रहा हूँ। वो क्यों प्री पिक रखेगा, देखेगा तू शॉट कवर दे बस। Get out of my way. मैं उनके स्पॉन में टीपी मारूं क्या? नहीं तो वो को मार सकता हूं। अरे पीछे आर्सेनल ली में बॉल है तेरे पास। Enemy down. Barrier created. One enemy remaining. ये भी खेलता है। ये भी होगा हाँ। प्लांट कर दो। Shock dart. Revealing area. Good up. Switching sides. A single life worth saving. भाई खा ली जितनी मार खानी थी। बज रहे थे ना लोग सिट पहले राउंड में भी। ये राउंड अगर जीत हाँ बस टट्टी लिखना इनको। इतना जितना टट्टी पोजी मिलना कैंप कर लो, आराम से निकल जाएगा राउंड। अबे एक ऑफ बना दो बस, उसके बाद हार्ड तो चला जाऊंगा। सुनो ये राउंड जीतो, बजो। अब नहीं बजना, 7-7 जब 7-7 क्रॉस रहेगा ना फिर बजेंगे। नहीं उन्होंने भी इको में जीते थे ना, तो बज रहे थे सेट हम भी बजेंगे भाई। We win, we survive. Barrier created. कब मिट गया? आ रहा हूँ, स्लॉप देने आ रहा हूँ। I guess मैं भागा। मुझे ऐसा लग रहा है लर्क आएगा इनका इस। बी से आया रिवील एक। आया ए पे। नहीं रिवील ए पे आया ना एक। ए पुश। प्लांटिंग है। Spike planted. प्लांट हो रहा है, लॉल। नाइस शॉट। एक बंदा मेन पे है, नहीं माना तुझे। अरे इधर है प्लेन 70। Enemy. Last player standing. सोवा मार गया खाली। अरे सोवा 62 पे। नहीं कॉन्क्वेस्ट वहाँ पे पुश नहीं करना, आराम से करना था वहाँ पे। Have any patterns emerged yet? ब्लाइंड आया क्लियर। निकालना है ये वाला। करना है भाई। बोलता हूँ ए पुश करते हैं। नहीं पुश मत कर, बाय कर, स्पेक्टर निकल जाएगा। एंड सोवा किल। अरे तो डिसमिस इफ यू कुड हैव। यूटिलिटी नहीं। अबे स्टिंगर नहीं चलेगी भाई, स्टिंगर तो बहुत बेकार है। तो क्या करो, मास्टर कर लो। वही कर ले, बिना आर्मर के ले ले चाहे स्पेक्टर। नहीं आ रही। अरे भाई यार। Standing ahead. Wall raised. मिड आ रहे लोग। बी आ रहे, ए नहीं आ रहे लोग। बी से रिकॉन किया उसने। अरे Last player standing. 137. Spike planted. Long. अरे भाई सारे 3 लोग 78 टैग करे यार, मार नहीं पाया मैं। Woman 137. Stay taut as a bowstring. The fight demands it. मिड होल्ड करो ना भाई, मिड मत। अरे तो ये गन ये बाय के चक्कर में ना ये वाला ही को है, ये बाय मत करो। तो ये वाला ही को कर, नेक्स्ट बाय कर लिया।
अरे तो पिछला वाला इको करके ये वाला बाय कर लेते, निकल जाता। वही तो बोल रहा था। अरे निकल जाता यार, मारते सब ना निकल जाता। ठीक है। मिड स्मोक हुआ, शॉट आ रहे लोग। You fought well. 104. Last player standing. Enemy Spike planted. वेक्टर बड़ी पीछे तेरे। दोनों 1 HP है। चलो दोनों 1 HP है। जेट को लो किया है सोवा ने, मैंने 104 दिया सोवा को। निकाल सकता है वो लोग एक दूसरे की पिक है। अरे यार कोई नहीं, अब निकालो। Watch them run when lit by my sonar. That's when we strike. अभी से। अरे मोस्ट कॉमन पोजीशन क्या है उनकी? अरे वो मिड कंट्रोल है। अरे वो लिंक आ रहे ना हर बार, लिंक से पिक लेता है। लिंक टाइल्स पिक ले, टाइल्स पिक। यार चाहो तो एमेन भी ले सकता था मैं, चल ठीक है। नहीं, जहाँ पे भी पिक ले रहा हूँ, कोई ना किसी सबको मारना पड़ेगा तभी ये कर पाएंगे। Get out of my way. वो लो है 120। लिंक आ सकते हैं लोग। स्मोकिंग है। Cover going out. एमेन क्लियर है अभी तक। कर दिया। टॉप में देख रहा तेरे लिए। बी आ रहे हैं क्या? बोलो। ड्रोन है तो बी नहीं लग रहे, बी नहीं। एक लिंक पे है, एक लिंक पे है, लिंक पे है एक। किधर है? है साउंड आ रहा है। हाँ बी पे दे देता। ए वॉकिंग होएगा। Right here. Watching here. बी। अरे कितना होल्ड कर रहा है ये साला लिंक पे, राइट साइड। 30 seconds left. बी होगा, बी। दो लोग बी पे हैं, किल जाए और नहीं मिड जा रहे। अंदर आवाज मत कर ना साइड। वापस भी गए। तो गया। हाँ बी पे जाता रहो। 10 seconds left. और उठा लेना, डाल। देख अरे और उठा ले, आर्सेनल मेरी उधर ही पड़ी है। One enemy remaining. हाँ पीछे तो वो कहीं फेंक के आ गए तेरी। आप Enemies close. ले गया होगा। वो कहीं फेंक के आ गया। आप अपना पिंग दिया पता है उसको। मैं वो कर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, ठीक है। बोलूं मैं। ओए कॉन्क्वेस्टर लाइट शील्ड पे ऑफ दे दे रेना को, जेट को। अच्छा रहने दे। अदौड़ी बड़ी शिट, कोई नहीं। अरे बी रहना। बताना बी आ रहा है तो। Barrier created. हाँ मीडिया भी। मिड क्लियर, वाचिंग टॉप मिड। एमेन दोनों मत छोड़ो, बोलो एमेन दे। You should run. आंदे। I can't use that. ब्लाइंडिंग। गेम में पीछे से Unavoidable. चिल। Healing you. जेट ऑन साइड। रिवील है, बोलो रिवील है। 114 है। Spike बी में 114। लेफ्ट में कि राइट में? मैं लेफ्ट देख रहा राइट में थी मेरे टाइम, पहले तो राइट में थी। One enemy remaining. Last अरे राइट साइड। player स्टेज 12 गोलियां। आराम से। डिफॉल्ट है। साउंड क्यों दे रहा है? I know what must be done. टीपी कर रहा है, साउंड क्यों दे रहा है? थोड़ा वेट कर लेता, वो घूम जाता वो एकदम से।
कितना मारा था जेट को ऐसे किसी ने भी नहीं मारा, वो स्टेज पूरा ये करके आ गया। तो बोल रहा था जेट को। अरे तो हम कब से बोल रहे हैं जेट स्टेज जेट साइट बोला, फिर प्लांट करके वो स्टेज ही आ गया सीधे। तीन मारे उसने एंड में। Barrier created. मैं भी आ रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ मैं। ओमेन तो होल्ड कर सकता है। कंट्रोलर भी गया, जेट भी गया। साइड तो नहीं गया कोई? नॉट येट। ये लोग ले जाएंगे। तो रेस्ट दे देना। नहीं एक पिक देखता हूँ पहले। कॉन्क्वेस्टर बी में जाना है क्या जरूरी? एक कंट्रोल मत छोड़ो, मैं लेके। हाँ वही, एक कंट्रोल मत छोड़ो। चल निकल गया राउंड आराम से। सेफ खेल लो। यही है, ये प्लांट हो रहा है। अल्ट कर लेना, वाइंड कर ले। Spike planted. रुक जा दो। Cover going out. अरे यार, लेफ्ट में थोड़ा सा वेट कर, रेस्ट करके आ रहा उसको। अरे उधर कहाँ जा रहा है रेस्ट करने तू? कॉन्क्वेस्ट पहुंच गया है उधर। One enemy remaining. जेन लास्ट जेन क्यों जेन अंडर है, दिख गया तुझे? नहीं है रे, तेरे को तो जाना ही नहीं था, पता है। नहीं अगर ये आधा करके मर भी जाता ना, मैं कर देता था। नहीं हो जाता, सच में बोल रहा हूँ। नो रेना अब आ रही है क्या तेरे पास? और मैं गन दे दूंगा। मेरे को कोई बाय दो भाई, और बाद में कर लो। रुक जा, नहीं मैं दे रहा हूँ ना भाई, मैं दे रहा हूँ तेरे को, तुम मेरे को दिला। मैं स्टॉप। उनके खाली 2 बंदे मार रहे हैं, 3 बंदे मार रहे हैं। मिड कोई नहीं देख रहा था। Spike down A. केजे शॉट कैफल स्मोक के अंदर है। दो लोग हैं, ओमन और तोबा। वही है, देख के कर। मैंने वॉल बैंक दिया उसको, लो होगा। नाइस वन। दोनों एमएन थे। ओमन टॉप मिड। One enemy remaining. स्पाइक ड्रॉप। Spike down mid. पुश कर दे, स्पॉन पुश कर दे। आने दे, अबे इकोनॉमी खराब मत कर, आने दे। चिल करना। अब मुझे ऑफ चाहिए भाई हर राउंड। 30 seconds left. शॉक डॉट मत वेस्ट कर। मेन आ जाओ। नहीं इधर ही रहना है। मतलब दिख गया भाई, उधर है। अरे तो स्पाइक तो अपना तो 10 seconds left. पुश करके मारना पड़ेगा उसको। सेव मत करना। लॉल मेरे हाथ में पता नहीं, मैं गन पे नहीं। Let them try to get through me. Need a drop. Thank you. मेरे को इधर लॉल। सोवा 120 टैग्ड। Careful here. केजे 80, सोवा 120, ओमन 180 और के 145। ड्रोन तोड़ देना उसका अगर आए तो यार। दोनों साइड से। Get out of my way. Wall raised. Enemy spotted mid.
down mid. One क्यों enemy मिड लास्ट remaining. मिड डैमेज खाया मेरे से मैं देख रहा हूँ। भाई मैं साउंड बी मेन देख एक बार। अबे सीटी तो नहीं आ जाएगा, मैं एक्सपोज्ड हूँ। नहीं सीटी नहीं आ सकता। Thirty Media. seconds left. तेरे पे आ रहा है वुमन। नहीं मेरे पे आ रहा है। नहीं ये जा रहा है। स्पाइक उसी पे। हाँ उसी पे है। बी पे रह जाए। ए प्लांट। खोल रहा है प्लांट वो। अरे घुस के मारना उस पे। बाय नहीं है उस पे। Spike planted. अंडर है। आन दे मुझे जाने दे। हो गया। नाइस। Shadows traveling. Blasphemous. A bow and arrow is old-fashioned. Sometimes old ways are best. अबे ए वाला बंदा मेरे साथ आओ, जल्दी आओ। एक ए शॉट और देख लेना प्लीज। थर्ड मैन ए शॉट देखो। Careful here. नहीं इधर मत आ यार। एक बार ना मेरे को यहाँ कवर दे। ऊपर चढ़ के कोई अगर मारे मुझे ना। स्मोक कर देता ना मन में करेंगे। नहीं मत कर। नहीं वो ऊपर चढ़ेगा ना वो एकदम। वहाँ देख ले बस एक बार। Barrier here. एक तो नहीं था जा तू आगे जा। वन मिनट। Spike down A. पीछे आ जा, हो गया अपना काम हो गया। टाइमिंग थी बे। मैं वॉल गोइंग डाउन। एक मिनट देख के कर। मेरे वॉल मिड में किधर? यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। वो मार्क पे जहाँ पे चुपने की जगह है देख। वो लो गया अटैक किया वॉल थ्रू। पीछे जा। ए शॉट। हाँ मिड छोड़ रहा हूँ। रेना मिड आ जा। दे गॉट ए शॉट कंट्रोल नाउ। कोई नहीं है शॉट। ए मेन रे। शॉट पे भी है। शॉट पे बंदा भाई हेल्प किया इधर। Spike down A. 30 seconds left. अपने स्पाइक कंट्रोल है। हाँ शॉट है स्पाइक पे। ओए इन पे ब्लाइंडर नहीं है, कुछ भी नहीं है, देख के करो। Spike is safe. नाइस ऑल रे। ए मेन देख शॉट देख। सत्तू सेव कर आराम से कर। हील दे। 10 seconds left. एक शॉट पे होगा अभी पक्का। नहीं है टाइम नहीं है। तू देख ले मैं देख रहा हूँ मेन। Win. Show me where to go. अबे भाई वुमेन पता है मेरा ध्यान भी नहीं था। मैं तेरे से बात करते उसने एकदम पीक दे दी। हाँ ना ओके वाला। अबे वो तो उसके हाथ में फैंटम थी तो वो मर गया। 140 देके 5v4 अबे वापस 5v4 आराम से करते हैं। चलो वेंडल होती तो साला मार जाता। शील्ड सत्तू शील्ड। Barrier created. Need help. केओ लिंक पे है। अरे क्यों हमारा अरे क्या है इसका? आने दो। ऑन साइड 2 ऑन साइड। भी आ रहा हूँ। अल्ट पे खेल ले कॉन्क्वेस्टर। Spike planted. Still in sight. There. रिवील है क्या? पता है रिवील है। 5 सेकंड रिवील पे। रिवील का वेट करो। बी मेन होगा एक। Right here. ये आगे Scanning ahead. On
अबे नीचे बैठे कोपचे में। Last player standing. One enemy remaining. अरे कोपचे वाला मार यार। नहीं वो बीमेन था, वो बीमेन। Match point. यार बीमेन कवर दे देते ना, निकल जाता है ये वाला। and you shall receive. मैं बी आऊँ क्या? बी अगर अच्छा पड़ रहा है बी आता हूँ मैं। चल Need a drop. बाय आएगी तो पे। Thanks. अबे यार ये सोवा का बच्चा। अरे मुझे ना निकाला तो राउंड ही मिल जाता आराम से। मैं ये रोटेट कर रहा हूँ। मैं रोटेट कर रहा हूँ, तू मिड होल्ड कर। सोवा देख लेगा। रेना शॉट आजा, रेना शॉट होल्ड कर ले। देखो ये शॉट देखो। Enemy spotted A. Spike down A. 80 टैग केजे 80 टैग। राइट में रहते हैं, उसको मारना। One enemy remaining. ओमन अननोन स्पाइक खुलने में पड़ी है। Deploying drop. सत्तू तेरे पीछे देख एक बार। स्पाइक पे ध्यान रख। नहीं नीचे मत जा, स्पाइक पे ध्यान रख, वो ऑल्ट करेगा। स्पाइक लेने जाएगा। उसको ले जाने दे उसको एक काम से। नहीं लेके जाने को नहीं, वो बी पे जाएगा ना सीधे। ये नहीं, ये मत कर यार यहाँ पे आके। Scanning ahead. या तो स्पाइक लेने के लिए अल्ट मारेगा तो ओमन अल्ट लेके दे। 30 seconds left. Caution here. नहीं वो या तो ग्लास तोड़ के आना पड़ेगा उसको। आ गया बीमेन, आ गया बीमेन। नहीं टीपी किया लेफ्ट में। करने दे। शॉट जेट 50 केजे 80। ए क्या मारा है भाई यार। Just let them try to catch me. मौत को छू के टक से वापस आ गया। गोलू भाई किसका अल्ट है? केजे का अल्ट आने वाला है। हाँ बोल। स्पैम वैर तो वॉल कौन करेगा? Right here. Revealing area. Wall raised. टॉप मिड आई थिंक। ये फेक होगा, चलो फेक होगा तो फेक नहीं मारना। हाँ मैं शॉट आ रहा हूँ। एक मिनट आ जाओ। आराम से निकल गया। केजे Spike down A. सोवा भी होगा वहाँ पे रिवील करने। केजे लेफ्ट में नहीं निकलेगा वो। बी जाएंगे सब मत। केजे लेफ्ट में, यहाँ पे केजे अटक गया वो। अभी नहीं जा सकता अभी। स्मोक बंद देना, कुछ भी हो जाए। ओमन स्मोक करेगा उनका ओमन नहीं करेगा, इतना दिमाग नहीं है। हाँ कर रहा है। आई एम कमिंग मिड। Deploying drone. स्मोकिंग भी कर ले। अबे सब मत आओ अबे फेक हो सकता है। चिल शॉट कर। 30 seconds left. ए होगा अपने सोवा ने पुश कर लिया डब्बा। One enemy ये भी दरवाजे पे था। प्लांटिंग साइड flawless. नाइस राउंड। अबे सोवा की क्या सुन लिया भाई। Overtime. मेरा हल्का सा शॉट मिस हुआ, दुम दबा के निकल गया एकदम। भाई क्या होल्ड किया मैंने और रेना ने साइड पे। ओहो दो बंदे पट गए। ओमन डिस्क तो है ब्रो, वॉक करके चलेंगे ठीक है। पहले ड्रोन कर ले यार ऐसे यहीं से खड़े होके जा रहे इधर से। आई गेस एग्रेसिव है, मुझे पता नहीं उसके लिए। ये प्राइम दियो। एक जन बैकस्टैप होल्ड कर लो खाली। मेरे को तो दे।
No. Need to drop mission. रुक मैं ऊपर जा रहा हूँ. Revealing area. क्या है? मत जा स्मोक में मत जा. नहीं ये स्कैम करने वाला बंदा नहीं है. तुझे यही मिला अटैक करने को. कोई हेवन वाला नहीं अटैक कर सकता था. स्पाइक लेके आ. अरे स्मोक होते ही किया ना. होल्ड कर आ रहा हूँ. ड्रोन करेगा. मत कर पिक उधर. अरे पहले किसी को ड्रोन ना पहले साइड चेक कर दिया कर. गार्डन चेक करने का फायदा नहीं है. ओमन जेन सोवा बैकअप साइड. एक बैक स्टैब. अबे बैक स्टैब मेरे बैक स्टैब. Switching sides. कोई बात नहीं. नेक्स्ट टाइम अटैक में बी करेंगे. Careful here. अटैक में स्प्लिट ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है. पिक पे खेलना पड़ेगा फिर ये करना पड़ेगा. मिडटॉप नहीं आता कोई. मिडटॉप कोई नहीं आता. वो ड्रोन तोड़ी दो. नहीं ऑफ करना पड़ेगा बे. Stay safe. Careful here. केओ चाकू होगा. केजे बी. Enemy spotted B. B-men, they have control B-men. There. ओमन टीपी समवेयर. बी पे स्मोक चाहिए. कोई बात नहीं. मैं देख रहा हूँ B-men. नहीं मैं देख रहा हूँ. मत मरना. स्मोक कर रहा हूँ. तू ये ले. नाइस शॉट. पीछे आ जा. नाइस राउंड. केजे भी था. Still watching B-men. ओमन इज बी. ओमन ने बी स्मोक किया. आई मीन वाचिंग टॉप मिड फॉर यू. दोनों में बैक मेन व्हाट एमेन. हां एमेन. ठीक है रोटेटिंग. नहीं गन निकाले. ओमन प्लांट मत करने दे. मार दे चाहे मर जाइयो. बैठ जा कॉन्क्वेस्टर बैठ जा. 30 seconds left. Fall back. Spike planted. One enemy remaining. Nice round guys. Still inside. Reloading. For you. They have seen our power. Scanning ahead. Switching sides. अबे स्प्लिट खेल के स्लो खेलना थोड़ा. हाँ Overtime. ऑफ कर रहे थे तू. अबे ऑफ नहीं. मैं सोचा वेंडर लेके वॉल बूस्ट लूंगा मैं. यार ऑफ करूंगा तो तुम लोग संभाल लोगे राइफलिंग. भरोसा नहीं है खुद पे है कॉन्क्वेस्टर. अब तो डेथ मैच में ऐसा नो ऑफ ही लगता है. अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई. मेरे को एक बात बता आर्सेनल. वो मैं साइड में क्यों नहीं मार पा रहा. ठीक नहीं तुझे मारना नहीं आता. अबे मैं हर बार शॉट पीक नहीं. मिड पीक नहीं किया उन्होंने. हट. Take flight. मिड. अबे मिड टॉप से बैक स्टेप आ सकती है वो एमेन से. स्मोक करो. रहना जल्दी बोल. Right here. करो. आवाज मत कर गोलू. तुम लोग वापस से एक ही गलती कर रहे हो. ए छोड़ दिया तुमने पूरा. Careful here. Right here. अब ए पे खेलोगे तभी पिक्स मिलेगा ना. कहीं पे तो सब बी अटक जाएंगे तो क्या होगा. भाई गेट पे कोई आया. मरा. पीछे आओ. सब पीछे आओ. नहीं जाना. तो ए चलो. ए आजा. मिड से जा रहा हूं मैं. मिड टॉप देख लियो. टॉप देख एक बार. एमेन जा रहा हूं. जेट उनके स्पॉन पे. Someone's in defender spawn. राइट चेक कर.
स्मोक कर रहा हूं कवर पे। ओमन स्मोक किया। Cover going out. 30 seconds left. देख के जा कॉल कभी चेक कर एक बार। Stealing sight. केजे मिला, वापस आ बी जा। नेवर माइंड। मैं गया ओमन जनरेटर आऊंगा। अरे मैं स्मोक Down A. मैं स्मोक टू ब्लाइंड भी हूं। मैं भी खुद वही। तू क्यों जा रहा है कुत्तों की तरह? वेट कर लेता 10 थोड़ा सा। seconds left. ओ ये मैन गया। Scanning ahead. प्लांट Last player अरे standing. नहीं है टाइम। मैं सुन जैसे स्मोक के इधर पहुंचा ना जस्ट बाहर लेफ्ट में मैं Switching sides. Match point. वो यही कर रहा है, कैंप भी कर रहा है। अबे तुझे पता होना चाहिए ना, यहाँ पे ब्लाइंड दे देता इंस्टेंट। अरे मैंने राइट में ब्लाइंड दिया पूरा ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं। अरे तो वो चेक करना होता है, ब्लाइंड नहीं करना होता, वो चेक करना होता है। जैन तू चेक कर नहीं सकता वो एंटी के टाइम पे। तेरे मैं भी ब्लाइंड हो गया और मैं घुस ही नहीं पाया उसके बाद। मैं वेट कर रहा था कि मुझे ना मार दे। तू जिंदा बच गया, मुझे लगा मेरे पे स्प्रे करेगा। वो लोग Wall raised. बी बॉयज। ये तोड़ दे खाली मत हो, कोई नहीं। 120 पहन दे। साइड निकल गया, जेट साइड निकल गया। 120 है। अबे आ गया ओमन। ये क्या बैठा है? अबे कॉन्क्वेस्टर कॉल दे दिए भाई, कॉल दे दे। Bullseye. एंटी Attackers win. कॉन्क्वेस्टर लिटरली एक कॉल। साला गेट पे यार खाना लेके आए हुए थे। 10 मिनट तो उन्हें खड़ा रखा मैंने। आर्सेनल तेरे को पता है इसलिए मैं बोला था एक सेंटिनल चाहिए होता है हमेशा। बी साइड बिना उसके होल्ड करना काफी टफ। अरे तो एक बंदा खाली कैसे होल्ड करेगा? इतना तो दिमाग लगाना चाहिए। 3 बंदे पे क्या कर रहे हो? मैं अबे यार राउंड 1 खेला हूं। पर से लास्ट 4 सेकंड के बाद तो मैंने जाना शुरू करा बी की तरफ। तुम्हें एक जने को जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, बट वेल प्लेड। एक और लगा लो। क्या जा रहे हो सारे? कॉन्क्वेस्टर कॉल देना होता है ब्रो। ओमन का कॉल दे देता ना। मैं क्या बोल रहा हूँ 10 मिनट में आ रहे हो क्या? खाना खा के आता हूँ। मैं शायद निकल जाऊंगा। ओके हाँ जाना पड़ेगा। ओके मैं कुछ और खेल लूंगा। ठीक है फिर बाय बाय गाइस। बाय संतु। चलो अच्छा खेला बे। बाय बाय।
escape. Take flight. Shine down. I'm going in. Inazuma shines eternal. Whirling snow. Kamisato art. Illusion shattered. Absurd. Unthinkable. There is no escape. I swear by my sword. My apologies. Yeah. जहाँ पीछे थी उपमा खाता था थोड़ा सा कर ला और कुछ नहीं खाता लाना क्या ठीक है क्या कार चलाने वास्ते I do hope the Knights of Favonius are all working hard. It's time to move on. We shouldn't stay here.
I do hope the Knights of Favonius are all working hard. Onwards! We have work to do! I do hope the Knights of Favonius are all working hard.
Those two look familiar. अबे सत्तू वो है नहीं, चला गया वो कब का। Ah, it's Ipe and Shinojo. What? You forgot already? That one is Shinojo. Back when we first arrived in Inazuma, we escorted Hiragi Chisato out of Rito with him. Remember? That's how we got out. नहीं सत्तू मैं नहीं खेल रहा, बोर हो गया। Kamaji's servant. That day when we hung out with Ed. All part of Paimon's job as your guide. Anyway, let's go say hi. Hi, Ipe. Hi, Shinojo. What are you guys doing here? Oh, it's you. Thanks so much for your help last time. I was just ordering some clothes when I ran into him. You know these two as well? Yes, they helped me and Master Kamaji out a great deal last time. I never had the chance to say thank you properly. What about you? How do you know them? Also a chance encounter. Our lady had them join us as additional guards for a goods escort in order to sneak out of Rito on... So we all know each other, huh? What a coincidence. Not exactly. We've only just met. We both came here to order some clothes and got to chatting. Somehow we ended up on the topic of Master Kamaji and Lady Hiragi's relationship. Wait, it's okay to talk about that, right? It's probably fine. They've known about it for a long time already. Oh, yeah! Paimon remembers those two had a thing. That's old news, though. So, why is it... We have reason to suspect that they'll be getting married. Wow, that's great! They can finally make it official! Of
course, this is just personal speculation. They haven't announced anything, and we would... I was instructed to place an order for some formal wear for a big banquet. Turns out that eBay received... They're both preparing for a banquet at the same time. They're both purchasing the kind of fine wine and confectionery normally reserved for big festivals. It's... Lady Hiragi has been in high spirits recently, and... This is wonderful news! What's wrong? Oh, don't mind me. She's about to be... Right? I think so Yes, but we shouldn't let ourselves get overexcited. What if it's... Now, if they sent me out to deliver wedding invitations, that would be a different... Shinoju doesn't look like he's taking this very well at all. Sorry, I just haven't slept well recently. I'm ashamed to be so out of sorts at work. I'm not living up to my responsibilities, either to the Kanjo Commission or to my lady. Are you worried about their wedding? Not exactly, it's just... everything feels I get what you mean, I really do. We need this wedding to... What should we do? Should we just straight up ask them? I don't know. That seems a bit rude. Right! If Ayaka knows about it, that means it's a sure thing. I don't think it's a good idea to bother the Yashiro Commission about this. It's fine. He and Ayaka are practically best buds. There's nothing... I see. Then thank you. Thank you very much. Let's go to the Kamisato estate. This place impresses me every time I come here. It's so magnificent, but still so elegant. We'll just wait here. We don't want to cause any extra trouble for you. Ayaka wouldn't mind. Honestly, even if we did come with you, we wouldn't know what to say or do once we were inside. All right then. We won't be long. Very well. Without looking at the board, you've ruined my strategy in one move. Amazing. Now what should I do next? Ayaka, Toma, it's us! Huh? Hey guys, it's been a while. If you're looking for my lady, I'm afraid she's not here right now. Oh? That voice. Toma, would that happen to be the traveler? Yes. Greetings, traveler. Ayaka speaks of you constantly. Finally, today is the day. I am head of the Kamisato clan and Yashiro commissioner, Kamisato Ayato. Greetings, both. I have long been indebted to you on my sister's behalf. Finally, I have the chance to express my profoundest gratitude to you in person. Ayaka is out today. If you are here regarding anything related to the Kamisato clan, you are quite welcome to discuss it with me instead. Oh, hi. Your flattering words flatter us. Please excuse the suddenness of our visit, for it is most improper etiquette. Why on earth are you talking like that? Well, he seems like a pretty powerful person. He's already working his way up Paimon's list of people to never mess with. Look, as soon as he stands up, the whole atmosphere in the room changes, and it feels like you gotta be super polite. You shower me with praise undeserved, my little guest. There is no need to be quite so formal. This is a private residence, so please. Oh, good. 'Cause that whole spiel was really tiring just now.
Alright, now that that's over, Paimon's just gonna ask the question. We heard a rumor that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato are gonna get married soon. Do you know anything about that? Oh? I wouldn't have thought you'd heard about that yet. I see. Well, it's true. It wasn't long ago that I received the news myself. The head clans of 2 commissions are to become joined through marriage. This is big news for the whole of Inazuma. Since the Yashiro Commission presides over cultural and ceremonial affairs, it closely involves us, too. Yes. And since the commissions are kind of the face of the Almighty Shogun to the masses, this wedding is one that we have to treat as a serious affair. Right! Makes sense. Ah, 2 true lovers becoming husband and wife. What a happy occasion. It is. High-profile matrimonial links between 2 commissions are extremely rare. But these 2 truly love each other. Tradition should give way to freedom in this case. All right then. I'll be sure to pay them a visit to send the best wishes of the Kamisato clan. No need. I'll visit them personally this time. Huh? But you have other things to be doing. This is a marriage between the Kujo clan and the Hiragi clan. The work of the Yashiro Commission is indeed multifarious. Normally, weddings and other ceremonies would come under the supervision of my sister. But she is presently occupied with other matters, and I happen to have a little time to spare. This will be a good chance for me to pay a visit to the bride and groom. Oh, and would you 2 care to join me? I presume you 2 have a special connection with the individuals in question, or you would not be quite so interested in this matter. This being the case, why not come and offer your best wishes too? Or is my presumption incorrect? Oh, it's not as interesting as you make it sound. No special connections here. Super ordinary ones, actually. We just agreed to help deliver a letter this one time, that's all. Although, wait. Does that mean we helped make this wedding happen? Alright then. I cannot thank you enough. Your mere presence shall surely mean we are spared the futile pursuit known as small talk. Wait, you're the Yashiro Commissioner, but you can't do small talk? Small talk is a chore. Of course. Toma, I'm heading out with my 2 guests now. I'll leave the residence in your capable hands. Not a problem. Take care, my lord. You're finally... Ah, Yashiro Commissioner! Who are these 2? They're friends of ours. Paimon will do the So it's true. Well, there we have it. That's it then. Great, so our hunch was spot on. It is a little inappropriate for me to have shared news of this magnitude with you. So I would be much obliged if you could keep it in strict confidence until an official public announcement is... Don't worry, sir. We give you our word. We won't tell anyone about it. That puts my mind at ease. Now, on the topic. Of course not. I'd be honored. I guess this is where I... Aw, cheer up, Shinojo. I'll try. Thank you. All right then. Please excuse me.
I'll leave you to it from here. Okay. Thanks, eBay. I apologize that your impromptu visit comes at a busy time for us, Commissioner. Otherwise, you can be sure that we would have prepared a more extravagant reception. I don't mean to impose, Sir Kujo. In fact, I'm not here on official business at all. I heard the good news about yourself and Lady Hiragi. What a glorious marital alliance this shall be. Given the close ties between our clans, it seemed only right that I should come and offer the Kamisato clan's congratulations in person. I'm truly honored. I hope the news didn't come as too much of a surprise. Hey there! We came to congratulate you as well! Since the incident with the Takatsukasa clan, things in the Tenryou Commission have slowly started to stabilize. I'm still acclimating to the position of acting head of the clan. I just hope I'm up to the task, so I can live up to everyone's expectations. You're far too modest. The public thinks very highly of you. They say... I'm flattered, but I wouldn't have achieved anything without the support of my people. Thanks to them, everything is gradually stabilizing, and I finally had the chance to focus a little on my personal life. Well, you're certainly making big progress in that department. Come on now, you're embarrassing me. Pardon me, It's perfectly all right. Please, continue. I'm quite content to listen. It's a joyous occasion. Light-hearted is exactly how things should be. Really, who stays stony-faced when talking about a wedding? You're right. But I am curious to know, what's your honest opinion on the whole thing? Do you think it's too sudden? Of course not. Where there is true love, nothing should be allowed to stand in its way. No doubt people will offer you a colorful variety of opinions. But of course, you will have factored this into your decision, and I'm sure you are prepared for whatever challenges may lie ahead. Indeed I am. So, please be confident. When your mind is made up, you Hey ought there, not be Vichan. worried Welcome about to things the for which stream. you are already well prepared. Nevertheless, there is just one small aspect of this that puzzles me a little. Please, go ahead. You've been working hard to bring the Tenryou Commission in line. This is positive, and no doubt the beginning of important change. This part of the game. But on the other side of this equation, is Lady Hiragi's father, Ayato's story. Hiragi Shinsuke, is still in prison. If you choose now, Thoda at sa all late ho gaye, moments but to announce a marriage between not the too late. Hiragi and Kujo clans, the kinds of rumors that may begin to spread both among the general public and in the Kanjo Commission are not likely to be in either of your best interests. Yeah. Couldn't have put it better myself, Sir Kamisato. This has been my biggest concern for quite a while now. Hiragi Shinsuke is firmly against me having any contact at all with Chisato. In the past, we've always had to communicate in secret by sending letters. So although now may not look like the best timing for this marriage, it may well be the only opportunity we have. Oh, that guy? Yeah, he acts like this sweet old man, but he was determined to make as much trouble for us as possible. Oh, he is the worst. I can see where you're coming from, but you're only postponing the problem, not solving it. Yes, I'm well aware of that. But since Chisato had the courage to ask me to marry her in spite of everything, how can I disappoint her? Well, sort of. She raised the idea in a letter, and after some initial hesitation, I went to meet her and have a serious conversation about our future. It's funny, actually, Okay, this part of because when I the formally proposed to her in person, she conversation I'm denied gonna having skip. ever written that. Huh? Really? She didn't say. Skip. Anyway, as her boyfriend, after making some Okay. Nope. We did. And you know what? I think it was about no matter what happens next. Oh, give me a... Sorry, but Paimon's been wanting to say this the whole... Apologies, my friends. Far from it. On the contrary, seeing you so positively smitten puts my mind at rest. No surer evidence could there be of your true feelings and your commitment. I wish you a joyous wedding when the day comes. Yeah, even if it's kinda irritating to see you all smug like this, it's still a happy occasion. Thank you all. It means a lot.
We have some other business to attend to now. Until next time. Very well. I'll see you out. He seems busy. That must be true for anyone about to get married, right? It's a happy kind of busy, though. You're right. Kujo Kamaji is on cloud 9. What do you think, Traveler? He chalked it up to her being coy, but that doesn't sound like the Hiragi Chisato I know. It bothers me also. But, unfortunately, attempting to seek the truth of the matter would likely be fruitless. Yeah, how come? Whenever we come across stuff like this on our adventures, we always find a way to get to the bottom of it. I see. Just let me know if you want to that's how skip this adventurers part. think. In my No, I'll opinion, just we straightly face two get to the obstacles in gameplay. this case. Firstly, Sub we filler have- avoid करके secondly, सीधा game and more खेलते हैं. importantly, if we intervene without his blessing, good intentions I mean, may it's lead all to up to you guys, catastrophic whoever's results. watching. Just let me know if you want to skip all these. You do have a point. Kamaji doesn't seem worried at all. Everything in the world is intertwined. What looks like a simple outcome is often the result of multiple conflating reasons. Seeking the full truth would be a long and laborious process. Sort of. I have to take this approach, or the work of the Yashiro Commissioner would never be done. My opinion is something like this. When something strange happens, instead of trying to find out what could have caused it, it is better to look at the situation itself. If the outcome is positive, and no one was deceived or harmed in the process, then it is acceptable. We don't know yet. After all, we don't know what Hiragi Chisato's thoughts are, do we? I have to say, I'm impressed by your ability to zero in on the issue from such a short meeting. Most insightful of you. You are thorough and thoughtful, just as my sister describes. Huh? But Chisato and Kamaji have already talked everything through, haven't they? Only if we are to take Kujo Kamaji at his word. But there are two sides to every story. I wish to know Hiragi Chisato's angle on this. Huh. Makes sense, but Paimon still doesn't quite get it. Don't worry about it. I was planning to visit the Hiragi clan to deliver my best wishes anyway. Let's take the opportunity to hear her thoughts. If she's as committed as Kujo Kamaji, perhaps they can navigate the well, the worst part about a story game is fillers life बहुत isn't ज़्यादा always होता a है. smooth Like journey. even if you know what's gonna happen, filler भर के दे देंगे ये लोग. Wait a second. But let me tell you, this one and this one, deadly combo, really deadly combo. There is still much to prepare for the wedding. Should we also invite some prominent business leaders who frequently visit Rito? At the very least, we should send them invitation. I agree. Ah, hello there, Yashiro Commissioner. To what do we owe the honor on this fine day? As it happens, I'm here regarding the same wedding I believe I heard you discussing just now. I come bearing the felicitations of the Kamisato clan. Would Lady Hiragi happen to be available at this moment? Our lady is entertaining guests right now, and we're not entirely sure how long she will be. But please, do come in. We will arrange some tea and snacks for you and your attendants. Hey, Paimon is not an attendant. You misunderstand. These two are dear friends. You're too kind. We don't wish to impose. We'll just wander around in the general area. Apologies for the interruption while you're busy with preparations. Please, let us know once later. Nonsense, Commissioner. No imposition at all.
This wedding is a joyful occasion, and all the other clans who serve the Hiragi clan are most delighted for them indeed. We're merely doing the best we can to make this wedding as grand an affair as possible. When the time comes, we'll invite everyone in the clan and even the general public to attend. That sounds splendid. We'll leave you to it. Take care, Commissioner. Seems like you guys talked a lot without actually saying. Kill some time indeed. Hence why I dislike small talk. Our timing was not ideal, but never mind. Oh, it's Tomoki! Ah, it's you. Good to see you again. Seems like you're always showing up with a VIP in tow. Oh? So you know the owner as well? Yup, we tried his dango milk a while back with the almighty Shogun in Inazuma City. Ah, I see. So you were involved in that. I'd caught wind of this dango milk, but I didn't know that it had anything to do with you two. I always order one of his creative drinks whenever I pass the stall. The flavor is always new and interesting. When I noticed he'd set up shop in Rito, I simply had to come by. मेरे को ऑप नहीं करनी चाहिए थी अटैकिंग में क्योंकि तेरे अलावा कोई भी ढंग से राइफलिंग नहीं कर रहा था. Thanks to you all, my business is finally beginning to take off. More and more people are willing to give my creative cuisine a shot. अरे सत्तू कोई नहीं, क्या हो जाता है? सब जगह पुश रोका मैंने. अरे ठीक है कोई नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते इस मैच का. It gave me the confidence to decide that I'm going to stick to creative cuisine from now on. Problem ये हुआ. On the one hand, I wanted more people to be able to try out my culinary creations. On the other hand, I wanted my customers to experience the joy of being creative too. So I gave it a lot of thought and finally came up with an all-new business concept. हमारा सोवा पता नहीं क्यों हगा, वो अच्छा खेलता है सोवा, वो पता नहीं क्यों हगा. कॉन्क्वेस्टर को रहना नहीं देना चाहिए था. नहीं वो हमने डीएम किया था, डीएम में अच्छा मारा वो. Sounds interesting. यहाँ पे आके ऐसा कर दिया. What is it this time? I've decided to give complete creative control to the customer. I offer all sorts of ingredients, and they pick and choose whatever they want to mix with their milk or tea. As well as dango, I now offer rice cake, purple potato balls, black sugar, and sunsettia. Do they really all go well with milk? Hard to imagine, but who knows? It could be delicious. What if I were to choose some ingredients you don't have here? Would that be okay? अरे छोड़ बे, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते हम. Well, I guess so. Any novel ideas you have, Commissioner? जिन दोनों को मैंने बुलाया था वो लोग आए नहीं. I'll go buy the ingredients right away. उसके बाद एक दो बंदे और बुलाए, फिर उसके बाद तुझे बुलाया. The whole idea was to let my customers express their creativity freely. So of course, I shouldn't place restrictions on the ingredients if I can help it. Excellent. There are a few things I'd like to try. अटैक में ऑफ भाई तभी काम की है अगर राइफलिंग सपोर्ट प्रॉपर. हाँ पता है बे, पता है. प्रॉब्लम ये था कि कोई लर्क कर ही नहीं रहा था ढंग से. स्प्लिट खेल के आराम से निकाल लेते ना, पिक्स पे निकल जाता अटैकिंग आराम से. डिफेंडिंग तो निकल ही रहा था ट्राई करके, अटैकिंग निकालना था खाली. Lavender melon, seagrass, and sea ganoderma. What? You want to mix those with milk? I do indeed. Why? What's wrong? You really think that's gonna turn out tasting good? It's all about the experience. The taste is secondary. It's great to try new things. Traveler, any thoughts? Yes, dango. Dango will do nicely. हाँ, coordination नहीं था. I know. Trades नहीं ले रहे थे ढंग से. An ordinary choice, but there's nothing wrong with that. 2 dango milks and 1 milk with lavender melon, please. No problem. Give me a second. I'll have them ready in just a moment. Here, your milk is ready. Give it a try. Dango milk tastes pretty good once you get used to it. What about yours? A most memorable texture indeed. Your review seemed pretty positive, but... Taste is your key concern, yes? Obviously! Tasty food and drinks are some of life's most important pursuits. Well said. If I could say the same was true for me,
I believe I'd be a very content man. Yes, no one has unlimited energy, and I try to conserve mine for the things that really count. To create some mental breathing room, I try not to overthink the less critical matters. Having my sister attend public events in my stead and having Toma as housekeeper has also been a great help. We're just passing the time here, though, right? Is there anything else to think about than what we're doing right now? One or two things. Let's continue this discussion somewhere else. I noticed something before we left the Hiragi clan's residence. No, it was just a small detail. I was curious. Naturally, they responded that all other clans are happy for the Hiragi clan, but that's not the truth. What do you mean? Hiragi Shinsuke is still in prison, meaning the Kanjo Commission is the least stable in the Tri-Commission. Hiragi Chisato is the sole remaining pillar of her clan, but now she plans to marry into the Kujo clan. But they didn't mention a word about that. They simply said they were delighted for them. These are not unintelligent people. I imagine they didn't want to discuss family issues in front of outsiders. But still, the more I think back over that conversation, the more it doesn't sit right. Keep a close eye on them, Hisashi. Yes, sir. Whoa! Where did you come from? This is one of my most trusted members of the Shumatsuban. He's been quietly watching out for us this whole time. Merely doing my duty, sir. Keep a close watch on the clan representatives we met today. Well received. I'm on the case. Oh, and I almost forgot. That milk I just had? Please order one more and deliver it to Toma. As you wish, sir. Oh no, poor Toma. Sir Kamisato, Lady Hiragi's previous engagement is now concluded. She's waiting for you in the courtyard. Thank you kindly. Let's go and see Hiragi Chisato. I heard that Sir Kamisato had brought some guests, but I didn't know it was you two. It's been a while, Lady Hiragi. How have you been faring? This is a rare privilege, Sir Kamisato. It is not often that I have the chance to meet you, let alone here in the comfort of my own home. I'm doing very well indeed, thank you. You must be so busy. Thank you so much for taking the time to come and congratulate. But of course. The Tri-Commission are the servants of the Shogun, and we should look out for one another. In fact, we visited Sir Kujo just now. Perhaps his joy is infectious, for I am now feeling rather elated myself. Thank you for your kind words. This was not an easy decision to make. I'm sure the news will cause something of a stir. But come what may, we will stand as one and face whatever the future throws at us, together. Sounds like things are pretty tough for you, Chisato. Yes. To be honest, I'm still a little nervous about it all. But Kamaji has been so supportive. His promises have comforted me a lot. It sounds like you have some considerable reservations, Lady Hiragi. Yes. Well, there are so many things I need to consider. In case you were wondering, I was not actually entertaining VIPs just now. I was in fact meeting with one of the Kanjo Commission's officers, Shinojo. Oh, really? Him? Mm-hmm. He charged in all of a sudden. He didn't mince his words. Basically, he doesn't want me to marry Kamaji. He has always been a calm and contained person who never acts out of line. But despite all that, what he was saying made a lot of sense. He pointed out that I am like the final pillar propping up my clan. If I marry into the Kujo clan, that pillar is taken away. It's just two families becoming one big family though, right? What's the big deal? Traditionally, in Inazuma, clan affiliation influences every facet of life. After the wedding, Lady Hiragi will belong to the Kujo clan.
The Kanjo Commission's attitude toward you may undergo some significant changes thereafter. Precisely. This is a terrible thing to be saying, but I'm starting to have second thoughts. Maybe I went along with it all too easily. Maybe I allowed myself to be pushed into this. I'm so sorry. I can't believe I'm making my guests listen to me complaining. No problem at all. The Yashiro Commission has a duty to listen to you. Now that I've heard your concerns, I should offer to help you as best I can. For instance, by helping you gather your thoughts on the matter. Now, we heard from Sir Kujo that his decision to tie the knot was prompted by a letter he received from you. But we've also heard that you did not write that letter. Sir Kujo thought that perhaps you were just being coy. What? But that was... It was just a prop in his playful proposal, wasn't it? It was clearly purpose-designed, what with all the fancy lettering and... Fancy lettering, you say? So I am to understand that had it not been for this letter, you two may not have chosen this moment to be wed? When it comes down to it... Yes, I think so. Sir Kujo maintains that the letter was penned by your hand. Huh? But then... How did... Either way, it's wonderful to see how much you both trust one another. In that sense, you could say that the origin of the letter is ultimately not of great importance. Who knows? Perhaps Sir Kujo was the one being coy. After all, he had no particular reason to be forthcoming with us about the details of his playful proposal. I understand. As you say, ultimately, the origin of the letter doesn't matter, but my position does matter. Kamaji and I thought that we needn't worry about anything that lies ahead, because we can face it all together. One second guys. But now, I think I should give it some more thought. Marriage is the most important decision of your life. Don't let yourself regret it. It is also part of the Yashiro Commission's job to help people through difficult times. I say this as an advocate for you personally, and for the Hiragi clan. To be together with the one you love is a sacred thing. I'll take to heart every word you have said to me. I can't thank you enough, Sir Kamisato. All that matters is that you follow your heart. Since you'll be needing some time to think things over, we will excuse ourselves now. Oh, wait! Let me see you out. Thank you, Lady Hiragi, but there will be no need. Traveler, let's find somewhere to talk. Hiragi Chisato is on a totally different page than Kujo Kamaji. Hayato, why did you give her such vague suggestions? Couldn't you just have told her what you'd do in her position? I've said everything I can, given the Yashiro Commission's stance. Interfering too much with other commissions' domestic issues will only create trouble. The more I think about it, the stranger this all seems. But Hiragi Chisato has yet to see it. Strange? In what way? Someone wants Hiragi Chisato to be married as soon as possible, and if my guess is right, it is someone from within the Kanjo Commission. This person is presumably also responsible for the mysterious and misleading letter. Think about this. A lowly officer is greatly worried about Hiragi Chisato's future, while the heads of the supporting clans ostensibly have no concern at all. It doesn't add up. When someone's words and actions do not match, you need to infer their intentions from their behavior. Yes, it's a smart strategy.
far superior to the one adopted by the Tenryou Commission's Takatsukasa clan. Even had the forged letter failed and been seen for what it was, there would have been no repercussions. But if the letter were to achieve its goal, as it has so far, the perpetrator would successfully weaken the Hiragi clan without ever having to lift a finger against them, all under the guise of simply encouraging a wedding. With Hiragi Chisato having married into the Kujo clan and the head of the Hiragi clan in prison, challenges to the Hiragi clan's leadership would begin to emerge throughout the ranks of the Kanjo Commission. Eventually, another clan would take the Hiragi clan's place. Actually, we have evidence. His name is Shinojo. Shinojo? He should be back by now. Yes, sir. That's the second time you've done that. I'm not gonna deal with this. Did they take one of the Kanjo Commission officers away? Yes. His name is Shinojo. As I expected. They cannot afford to let this opportunity pass them by. They have to act now while the Hiragi clan is at its weakest. Hiragi Chisato had been persuaded by Kujo Kamaji, and the wedding was sure to go ahead. But after Chisato's meeting with Shinojo, she began to have second thoughts. In their eyes, Officer Shinojo has interfered with their plan. स्टोरी लाइन तो है AML एक स्टोरी है पूरा गेम का स्टोरी अभी आया भी नहीं अभी But why did they suspect Wait, after this gets over, I'll show you a map. पूरा unlock हुआ नहीं है, but I'll show you where everything is. Excuse me. Someone was eavesdropping on our conversation with Chisato the entire time. That's why I was a little reserved. No way. Whew. Lucky Paimon didn't say anything stupid. But Chisato got what you meant about the letter though, right? I think so. But whoever is behind this will not allow their plan to fail now. Her stance was so passive that she was easily manipulated. Treated like a pawn with even her marriage. Despite all of this, she still believed that a happy future was awaiting her. Chat पे एक message डाल दे When she formally marries into the Kujo clan, she will lose her title as daughter of the Hiragi clan, her position in the Kanjo Commission, and a... Marriage is such a trap. Easier said than done. The perpetrators are manipulating everything from the shadows, letting unsuspecting pawns do their work. This is what makes their approach so smart. We, meanwhile, are out in the open. If we attempt to stop this wedding from happening, we will become the villains of the story and face immense public backlash. So what are we gonna do? At this stage, if the perpetrators wish to maintain control over the situation, their only option is to come out from the shadows and bare their fangs. I will wait for that moment to arrive. But first things first, we must go and rescue Shinojo. He has done nothing wrong and does not deserve to be punished. Tell me where Shinojo is. We'll head off right now. Stop this at once. It's the Yashiro Commissioner. Well, we take orders from our master. No one else. Really? Then please, excuse me. Who goes there? Soldiers! Be still. Let's light it up! Whirling snow! Get them! Go as well! Cascade! You must withdraw.
Kamisato office. Suiyu! I've lost. I must withdraw. Blast. Let's go. We must report to Master right away. Hey, get back here! No need to follow them. We need bait to catch the fish anyway. I think I saw a key fall to the ground during the fight. But in all the chaos... What the? It's a tanuki? Oh. Let's follow it and see. Thank you. Thank you. It was terrifying. They said they were gonna throw the cage into the sea with me still inside. Oh, wait. You have to listen to me. Lady Chisato's wedding. It's... Calm down, Shinojo. It's okay. We know about all that. Huh? Our suspicions were roused to this possibility, and so far, everything is unfolding rather as we expected. Those behind this plan are not going to give up easily. Yashiro Commission. This situation has consequences for the whole Tri-Commission, and the stability of all Inazuma is at stake. The almighty Shogun has always despised these pathetic power games. As a commissioner, I am a that's... Shinojo, don't return to your post yet. Find some traveler. Paimon. Let's get out of here. Well, if it isn't the Yashiro Commissioner, I hear you showed up here with no explanation and attacked my men. You wouldn't happen to be carrying out some sort of secret mission, now would you? I heard that someone was taking the law into their own hands. As a responsible official of Inazuma, I could not in good conscience stand idly by. Shinojo may be your retainer, but the law does not grant you the right to abuse him. Abuse? Nonsense. I was just teaching him a lesson. Out of nowhere, a low-ranking officer decides to barge in on Lady Hiragi and start spouting out the most absurd and insulting nonsense one can imagine. But truly, I dare say, the poor lady was terrified. So, you're saying that you know absolutely nothing of the reasons for his actions? Because otherwise, why would you describe it as out of nowhere? Two people from two different clans are getting married. That's all there is to it. And yet this young gentleman took it upon himself to fabricate a nonsensical disaster story around it. How should I know what he was thinking? Even if she marries into the Kujo clan, Lady Hiragi will always be the daughter of the Hiragi clan, and the most distinguished member of the Konjo We are, and always will be, her loyal assistants. It's our loyalty and duty are our guiding principles. Not only did this guard show no regard for either, he went out of his way to upset our lady. How could, even if we put it down to a rare moment of impulsivity? I have to say, I'm surprised to see one of such noble standing as yourself rushing to his defense. Darn it! This guy is good. Annoyingly good. Funny. I'm suddenly reminded of an anecdote I'd like to share with you. There's not been a dull moment since I took up my post in the Yashiro Commission. For instance, a merchant from abroad once told me about a curious kind of bird with the most extraordinarily long tongue. So long, in fact, that you can tie 2 knots in the portion of it that extends out of its beak. I'm sure someone as erudite as yourself could be able to guess what people do with these unusual avians. Keep them as pets. You'd think, wouldn't you? But there's a catch. You see, this bird is of no use to humans whatsoever. The reason they give is this. The longest tongue has the most to say. But don't be deceived as it chirps away, lest the song it sings lead you astray. You
I say, Yashiro Commissioner, are you here simply to mock the Kanjo Commission? Far from it. In my mind, the Kanjo Commission is made up of honorable individuals, upright and forthright, conscientious and loyal. It is unbecoming of such people to resort to lies, deception, and filibustering, all as part of a plan to remove Lady Hiragi from her position in the Kanjo. Yashiro Commissioner, please don't make accusations without any evidence. The evidence is standing right in front of me, is it not? I have a credible witness who can confirm you were quick to try and make him disappear as soon as he said something that you did not like. Ugh, dear me. I can't believe the Grand Matsura clan is now represented by someone with less of a sense of loyalty than even an ordinary servant. You studied hard and took a government position, only to make it to where you are now just to play these petty power games behind the scenes. I'm not sure whether it's because you're smart enough to play the system, or too foolish to know any better. In your years of service to the Shogun, not only have you managed to glean nothing good from the people around you, I'm not angry, Mr. Matsura. I just... Is that right? Then tell me, if you're so bright, what exactly do you think you can do to me? This is at most a Kanjo Commission issue. We'll handle this amongst ourselves. You are reaching rather outside of your bounds, Yashiro Commissioner. If you seek to involve yourself in other clans' affairs, might I be so bold then, as to question your motives in doing so? I think you are simply opposed to an alliance between the Kanjo Commission and Tenryo Commission. Because the new balance of power in the Tri-Commission would be a threat to you personally. So you come here with an elaborate excuse to try and break up this marriage. So, that's how you view it. Well, I have to admit, you clearly are far more talented than I at monitoring the power balance within the Tri-Commission. Let me be crystal clear. This wedding is going to... The notices have already been sent out. Most of the public weren't aware that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato were courting. But once the notices go out, that's it. The wedding is a sure thing. I see. It seems like I was wrong. So suddenly we see eye to eye. I had expected you to at least be smarter than most. But it seems that I was gravely mistaken. Kamisato Ayato! You... How dare you! You've made your move. Now, I suppose it's time I made mine. What do you mean? Do you seriously think this marriage will bring the Kanjo Commission and the Tenryo Commission together? Isn't it at all possible that the Kanjo Commission becomes marginalized as a consequence of this union? Goodness me. Well, I've learned a great deal. They had their scheme, but fortunately I was prepared. Let's see how things are in Inazuma City. Look at this. The daughter of the Kanjo... Sounds like an all-around perfect match, don't you think? For sure. I'm just surprised. It seems very sudden. I hadn't heard a single word about it until now. Good luck to them, I say. I'm sure it must have been a hard decision. Looks like the wedding is definitely going ahead. It's still too early to make that conclusion. Our adversary wants to push this but only if Kujo Kamaji is willing to help us. Welcome. I just heard that the news of my wedding has been officially announced. It seems so sudden. Yeah, about it. I see.
So someone's trying to... If you proceed with the wedding, the repercussions for you are likely to be minimal. But I've previously considered this possibility. But in the end, we're getting married for true love. And I've promised her that I'll do everything in my power to protect her. I understand where you're coming from, but to be frank, she should not need your protection. Or, to put it another way, you have tacitly admitted that Lady Hiragi will need your help to get through the hard time. I don't mean to criticize you. It is natural to want to protect our loved ones. You're an intelligent and gentle person, and I'm sure you would have been able to think about... I'm sure you admire Lady Hiragi for being for the sake of marrying you. Are you really okay? I love her with... That's why I cannot... Yashiro Commission, but it's too late now, isn't it? I have a plan. But, Sir Kujo, in order for my plan to work, you and I must both play the role of antagonists. But it is not... Are you willing to help? If there's a way to salvage this, then I've told the people at the Kanjo Commission that the marriage isn't going to unify the Kanjo Commission and the Tenryou Commission. The context for this is that they are planning to use this marriage to bring down the Hiragi clan. And the key to their success is coming up against no resistance to the marriage from the Tenryou Commission. But what if we were to imagine for a moment that since the affairs of the Vision Hunt decree, the Tenryou Commission has been planning to make a move against the weakened Kanjo. The only reason you have been hesitant to act since taking over the Tenryou Commission is because you care about Lady Hiragi's... And so, your plan is to liaise with the Yashiro Commission, to marry her and bring her out of the Kanjo Commission as soon as possible. Once that is achieved, as the person in charge of the Tenryou... I see. This is an ingenious plan. It takes advantage of the situation perfectly. Exactly. Our purpose is to change Lady Hiragi's position from an unnecessary burden to an indispensable asset. By doing so, we can even strengthen her position in the Kanjo Commission. Once our adversaries realize how the network of connections behind the scenes really looks, they'll do their utmost to stop this wedding. Then, we simply leave them to clear up the mess they've created. Got it. So the network... We have to make sure that the behind-the-scenes story comes to the attention of our dear Matsura, with whom I spoke earlier, will now be fearing the worst. No, in that case, he will almost certainly have placed informants throughout Inazuma City. What we need to do is to use... Sir Kujo, there are certain things that I need you to attend to personally. It's almost time. My ninja has located... That person is one of Matsura's informants. Let's follow him. Seems like he's noticed us. Huh? Where'd he go? He was right there a moment ago. Seems he disappeared. That person is one of Matsura's informants. Let's follow him. Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. Could it be related to the wedding announcement? Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. He and his men seem pretty intense at the moment. Isn't it all a bit excessive for a wedding?
The Tenryo Commission has sent a load of people to Rito. I guess it must have something to do with the wedding. I think in all there must have been about 100 people so far. That doesn't sound good. What could be going on? I hope it's just Sir Kujo Kamaji being overcautious. The news is spreading fast, but it appears Master's fears may be well placed. There's no way they sent this many people just to escort the bride. I have to investigate. As expected. Let's follow him. Wow! It's like the whole Tenryo Commission is here. Excuse me, has something happened on this road? I'm a businessman passing through, and it's a little disconcerting to see this place so heavily. Please don't be alarmed. As I'm sure you've heard, the wedding of Sir Kujo decided to send for Lady Hiragi ahead of time, and have her live in Inazuma City during the I see. We are here to clear the way for Lady Hiragi. Not just us, either. You'll see more Tenryo Commission members as you go further along. We're all here for the same duty. Isn't this a little excessive? Sir Kujo holds Lady Hiragi in the highest regard, and wants to treat her with the utmost respect, from beginning to end. I understand. Sorry to disturb. Drat. It's exactly as Master feared. They say they're here to guard the road, but really they're poised to attack if Master doesn't allow Lady Hiragi to leave Rito. Wait, no. If Lady Hiragi does leave, they'll have all the more reason to... I must tell Master right away. He ran off again! That should do it. The seeds have been sown. In this atmosphere, mounting suspicion will nurture fear among the Kangjo Commission. Now, we wait patiently for it to grow and ferment. The calm before the storm is always the part that unsettles people the most. Are they really gonna own up and apologize, just like that? If you're curious to find out, you can visit the Hiragi clan in Rito in a couple of days. I have some other business to attend to, so I won't be spending any more time on this situation. In any case, we've made our move. It's only a matter of time before they give up and surrender. This is not my first time. Well then, goodbye for now. I truly hope that things will work out in Hiragi Chisato's best interests. He left kind of abruptly. Are things really gonna turn out like he predicted? Paimon too. Well, let's go to Rito again in 2 days. These people from the Tenryo Commission have been here for days now. I guess they're here to pick up Lady Hiragi. I heard that the Kanjo Commission suddenly said they don't want Lady Hiragi. To be honest, I'd be hesitant if I were her. A crowd this size comes to Rito? Who knows what they could be planning? Shh, stay quiet. Right. Sorry. How did things get to this point? Hello. How may I help?
We arrived here 2 days ago to escort Lady Sakujo Kamaji gave us very strict orders, so we have to obey. But every time since we haven't fulfilled our duties yet, we decided to stay in Rito. We apologize. It was not our intention to stay here so long. We promise our presence here will not impact ordinary people. If this stalemate continues... How much longer does your master plan to hold them off? I have no idea. We're stuck in limbo here. Master's been very on edge these past few days. He gets irate over the smallest things, and is suspicious. I understand that he's anxious, but I mean, what can we do? I've told him before, never cross the Yashiro Yeah, good advice. With him, you just know that whatever he's doing, a lot of preparation has gone into it. If Lady Hiragi is really taken away, then what will the Tenryou Commission do? And what will the Yashiro Commission do? Maybe we should tell Master to discuss things with Lady Hiragi. Hiragi Chisato is now at the center of every conversation in Rito. By now, the Kanjo Commission probably knows how important she is. But... Oh, Traveler! I assume you've heard about everything that's been going on out there. What on earth is happening? Don't worry, we can explain everything. So, what happened was... After the Tenryou Commission arrived, they suddenly became alarmed. They keep having secretive discussions, and I never would have thought that this was Sir Kamisato's plan. I'm sorry. I haven't. Maybe there's no right or wrong decision. I used to tell myself things like this to avoid having to think about it. I didn't feel reassured at all. Instead, I keep thinking back to what Sir Kamisato said. This is supposed to be my... I can happily accept that if someone was trying to take advantage of my marriage, but that's not the answer I'm looking for. Ah, Lady Hiragi, here you are. You scared... You... Wait, you're the ones who were with the Yashiro Commissioner that day. What do you think you're doing here? Are you trying to convince Lady Hiragi to leave? Calm down. They're my friends. They're just here to visit me. Friends? Are you sure? Just friends? Lady Hiragi, I told you already, these are exceptional circumstances. You are extremely important to us, and to the entire Kanjo Commission. Who's to say they don't have a hidden agenda? If you want to accuse us of trying to abduct her, just come out and say it! Don't be rude. You've been very highly strung lately, seeing everything as a threat. Listen to me. I know all the ins and outs of everything that's happened so far. His arrival might well be your very last chance to fix this. The present state of affairs in Rito shows me that the situation has escalated well past the point where you could hope to control it. If this deadlock continues any longer, we will have nothing to gain and much to lose. This is not an order. All I need you to do is give me an explanation and take responsibility for the situation. Understood, my lady. Good job, Chisato! I was so nervous. But I thought things are now... Yes, well, let's wait and see what happens. I hope they provide a satisfactory response. We had a serious discussion and reflected on our mistakes. In all honesty, no one can handle the weight of the situation here. Everyone is besides themselves with worry. It'll drive us mad if it continues any longer. I'm so sorry. My actions were radical and duplicitous. I was selfish and ignored the greater good. And then I left the situation to... Would you please give us a second chance? For my lady's sake, I suppose you're right. The only person who can change the Tenryou Commission's mind will be the Yashiro Commission. We'll head off to the Kamisato estate shortly. And Miss Lady Hiragi, might I ask you to join us? By the way, aren't you a good friend of the Yashiro Commissioner?
Please put in some good words for me. Yashiro, Commissioner, I'm sure you've heard the news. The Tenryo Commission has now... I realize I have greatly offended you with my atrocious actions, and I'm sorry, Mr. Matsura. I'm exceptionally busy and have but a moment to spare before my next engagement. So, please, if you would be so kind, get straight to the... I know our apology means nothing to you, but we really have nothing else left to offer by this point. I'm terribly sorry. Lady Hiragi is indispensable to us. We promise to always support her. So, would it be at all possible for you to talk to Sir? You make it sound so easy. The Tri-Commission will be ridiculed by the public if we choose to withdraw the notices now and eat our words. To lose face for the Tri-Commission is to bring shame to Her Excellency. Are you and your associates ready to face the thunderous wrath of the almighty Shogun? We will take full responsibility. We'll publish a new notice. We'll do everything we can to minimize the impact. Master Matsura, you should have known it would come to this. Whatever were you think. But the Tri-Commission must always put the interests of Inazuma first. If the situation in Rito is left to fester any further, things may get out of control. If we fail to contain the situation promptly, the rumor mill will wreak havoc on the Tri-Commission's reputation. Try keeping a pet bird. You'll see what I mean. Songbirds who know how to hold a tune can be very pleasant to listen to, but they can also become irritating if they don't know when to stop. And as for the ones with excessively long tongues, well, they're so insufferable that they can't be kept as pet. Yes! I've listened to your concerns, and I'll talk to Sir Kujo for you. But I can't guarantee that he will change his mind. I understand. All right, you ought to return now. Okay, then please excuse me. Ah, yes, Lady Hiragi. I have... Oh? Why, of course. Sir Kamisato, you became a completely different person just now. It felt so intense. Unruly servants like him need to be severely reprimanded. As a commissioner, the almighty Shogun trusts me to do her will. I did as I but now, I'd like to take off my commissioner hat and share a Oh, please. You must have heard that the Kamisato clan once went through an extremely difficult period. My father worked incredibly hard to compensate for the grave errors made by the Kamisato clan long ago, and restore our reputation. My mother loved him dearly. She passed soon after. This sudden turn of events dealt a heavy blow to the Yashiro Commission. Behind the scenes, things became very unstable. Everyone thought that the Kamisato clan had lost power. That made my sister and me nothing but burdens, hindering the ambitions of others. It may sound preposterous now, but I assure you that is the truth of what the Yashiro Commission has been through. Huh. Pretty similar to how the Kanjo Commission is now. Back then, I had no choice but to accept the position I was in. While I desperately looked around for powerful supporters, I endured smear campaigns and attempts to exploit me. I had no other choice. I had to honor my parents' dying wishes, and I also had a young sister to take care of. I didn't mind what became of me, but my family. No one can ever be allowed to trample over my precious family. Fortunately, I persisted. I think I now know where my sense of loss and confusion was coming from. Shinojo once told me that he saw what was in me, in a way that no one else did. I thought the reason I felt unsettled was because of uncertainty over getting married. The reason why Sir Kujo was able to face the prospect of marriage so confidently is because he's prepared for anything. That's it. The situation when his clan was in crisis, he bravely... It is time for me to make a stand. Well said.
I'm sure once you have... It might not sound exciting. And I'm sure I will use this as an this puts less pressure on... My best wishes to both. Thank you, Sir Kami-san. Now, if you'll excuse me... Take care, Lady Hiragi. Yes. In fact, my recent experience... She really has the air of a leader now. Hats off to you too, sir. Everyone thought there was no way out until you... In fact, counter-checking is a perfectly common maneuver in our rival this time was easy to deal with. Even so, anyway. I agree. Stability in Inazuma benefit... Well, the fact is that I am first and foremost, perhaps for Master Matsura, power is his life's pursuit. But a stable nation is the prerequisite for a stable Yashiro Commission. Only then can the Kamisato clan and the... But human desire will always be a factor in the equation. All I have tried to do is make sure the three parties to the Tri-Commission serve to restrain each other. Another positive outcome is that everyone recognizes how important Lady Hiragi is now. I think I did her a sizable favor in that dealing with the Hiragi clan will be much easier for her than navigating a new and There were so many things at play over this one... wait a second! You weren't trying to stop the wedding from the very beginning, were you? I thought straight away it was bad timing. Nevertheless, everything I said to Hiragi Chisato was entirely sincere. If you choose to give up your stance on something once, I didn't want to see her suffer because she didn't realize what she was getting into. Now, she has the chance to become... Okay then, guess we'll have to wait and see. All right. Farewell. Looks like everything's resolved. Masterfully done. Everything was perfect. Well, Didn't you like it? I distinctly remember you saying you are quite partial to exotic flavor. Oh, my lord. The Traveler had one of those as well. I'm sure he's made a great impression on... The Traveler did indeed play a critical role in this case. I'm sure both families would have been more guarded against me had he and his companion not been present. It wouldn't have been so easy to get to the heart of it. There you go again, my lord. Placing the focus on other people while discreetly performing your job to perfect... Naturally. Yes. Now that we're both free, let's finish off that game of chess we started a few days ago. A blade is the... Embrace the ice! Stay close and you will live.
down. Whirling snow. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Barbados. Good. Barely a scratch. Sakura swirl. Take flight. Torn to oblivion. Well... The depths beckon. My apologies. Take flight. My apologies. Cascade. Let's light it up. Whirling. I'm going in. Kamisato on. Suiyu. My apologies. Kamisato out. Sometsu. Whirling snow. Get out of here. Everybody stand. Going flat.
Be still. My apologies. Cascade. Take flight. Wind, hear me. Stay close and... Let's light it up! There is no escape! Let's light it up! Shine down! Whirling snow! Going flat! I'm going in! Now you shall perish! Illusion shattered! Teamwork is dreamwork! Add Ast. Thank you for
It's time to move on. We shouldn't stay here.